प्रसारण में रुकावट के लिए खेद है। क्या आपने ऐसे वीडियो देखे हैं? गाइस, फर्जी गेमर वाइटी में आपका स्वागत है। मैं आपको लीड देने वाला हूं। आपका फेवरेट गेम जो कुछ समय पहले बैन हो चुका था वो वापस आने वाला है। क्या इनके पास सचमुच में लीक्स है या आपका क्लिक बेट कट रहा है? अगर आपको चाहिए ई स्पोर्ट्स और गेमिंग की दुनिया से वेरीफाइड न्यूज और मजेदार कंटेंट, तो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है पेंटा ई स्पोर्ट्स। पेंटा ई स्पोर्ट्स पर आपको मिलेंगे टूर्नामेंट्स, मिलेगी सर, बेस्ट माल वहां पर देखने को मिल जाता है। इस पे आपको देखने को मिलने वाला बढ़ा दिया। न्यूज। जिस ऑर्ग ने एक हफ्ते में एक नया रोस्टर और एक नया कंटेंट क्रिएटर साइन किया। काउंटर स्ट्राइक की दुनिया से लेटेस्ट न्यूज क्या है? कंटेंट। अभी के टाइम पे ऐसा है कि आप कहीं भी नजर मारो आपको कंटेंट मिल जाएगा। एक दिन ऐसी रैंडमली मॉम को कॉल करके बोला कि मॉम, नहीं हो रहा है मेरे से और मुझे गेमिंग करना है फुल टाइम। क्या वो ऑनलाइन खेलते खेलते लाइक इट बिकेम माय पैशन कि मुझे इंडिया का बेस्ट बनना है। और भी बहुत कुछ, और वो भी फ्री फ्री फ्री। तो अब रुके क्यों हो, जल्दी पेंटा ई स्पोर्ट्स को फॉलो करो और बन जाओ ई स्पोर्ट्स गुरु। Hello, everyone, and welcome to the Penta Podcast. This is our initiative to bring you all opinions from the leading voices of the industry across various topics relevant to the gaming and esports industry. I'm Kiran, ShaDeSLaYeR, Noojibail, head of esports at Penta Esports. Over the last 16 years, I've been a competitive player, esports commentator, live producer, show director, among others. In today's podcast, I'm joined by personalities who have made streaming PC games their profession and engage millions of audiences online. We'll be talking to them to understand what is it like to be a PC game streamer in India. Here's who are with us today. We have Xyaa with us, who was kind enough to be a Hello. part of one of the episodes of season 1 of our show 1v1. She plays multiplayer FPS and story-driven games and has just returned from Riyadh after competing in the CSGO Female Asian Championship. She has over 280,000 subscribers on YouTube. We have also Hydraflick with us today, with whom I've had the privilege to work with previously. He creates content and streams multiple games on YouTube, including shooters like Valorant. Alongside, he also plays PUBG PC competitively and has represented India internationally. He has over 327,000 subscribers on YouTube. Next, we have TheGamersToys, who casted the Penta Amateur League GT Sport tournament earlier. And he is a gaming content creator and streamer who loves playing simulation games. He has over 130,000 subscribers on YouTube. And finally, we have Sikhwarrior, with whom also I had the privilege to work with previously, who has over 150,000 subscribers on YouTube. He streams various kinds of games like story-driven ones and definitely a lot of FPS. So guys, let's just dive straight in. First of all, let's start by asking the titular question. What is it like to be a PC game streamer in India, which is a mobile first country? We'll start with you, Xyaa. I mean, it is good. We started off, I mean, when I started streaming, there wasn't a lot of mobile games around. So it was a good time. And then slowly mobile gaming came in, which actually brought in a lot of gamers as well, who started looking at PC games. So उससे हमको भी थोड़ा सा हुआ फायदा. But I mean, it's all good. Like PC gaming, mobile gaming, for me, we're all gamers. It's just like, yeah, अब लोगों को थोड़ा PC games के तरफ भी ध्यान देना चाहिए. Like फोन थोड़ा साइड में रखो, PC games भी खेलो थोड़ा. But yeah, overall it's fun. It's you're doing what you love. What more can you ask for? And of course, the beauty is all four of you are OGs in the PC game streaming space. So, like you Yeah. mentioned, Xyaa, I think all of you started streaming a long time before mobile game streaming even became like a thing. Exactly. So I think, and of course, I think all of us are doing this because it is heavily passion driven, and it's just that we all love playing games, and we want to share that with the communities that you guys have built over time. So, yeah, I think PC games is always going to be true to our hearts, and yeah, like you mentioned, hope a lot more people adopt watching PC game content and of course trying Yes. the games out themselves. So Yeah. yeah, over to you, Hydraflick. So, being a PC gamer, streamer, content creator in this space was basically we started for passion. At that time when we started back in 2018,
I started in 2018. At that time, PUBG Mobile or mobile gaming was not picking up. I mean, not a lot of people knew like what mobile gaming was. Everyone was into PC gaming at that time. It was a niche basically, and we wanted to entertain that particular set of audience. And we started with that. We had the opportunity to shift, but we stick to our the thing that we love the most, which is PC gaming. And yeah, it's been fun. Like when you do something that you really enjoy, rather than doing something for the audience or for growth. I mean, yeah, there's some sweet taste to that as well, but in the end, you have to stick with something that you enjoy the most, and that's what I did, and I'm sure most of the guys in the panel did. And we are really grateful for the support that came through. And yeah, I mean, it's lovely entertaining the audience that we want to entertain, not uh, the other way. Got it. The Gamer Toys? पीसी गेमर लाइक मैं यही कहूँगा कि इट्स एडवेंचरस जर्नी बेसिकली क्योंकि एवरी डे इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल सो आई बीन स्ट्रीमिंग सिंस ऑलमोस्ट लाइक अभी 6 years पूरे हो जाएंगे एंड एज लाइक जाया एंड हाइड्रा सेड दैट व्हेन वी स्टार्टेड उस टाइम पे मोबाइल गेमिंग इतना नहीं था और उस टाइम पे लोगों मतलब जितनी भी गेमिंग ऑडियंस थी इंडिया में या दे न्यू अबाउट द पीसी गेमिंग एंड दे थॉट कि दिस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड अगर आपको गेमिंग करना है तो लाइक यू हैव टू हैव अ गेमिंग पीसी एंड ऑल दो स्टफ बट इट्स नॉट ईजी ठीक है और आज के डेट पे जैसे आपने कहा कि इट्स लाइक मोबाइल गेमिंग ड्रिवन कंट्री हमारी अभी हो चुकी है डजेंट मैटर हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव 1 लाख 2 लाख 3 लाख और 5 लाख सब्सक्राइबर्स इट्स एवरीडे स्ट्रगल आपको सर्वाइव के लिए फाइट करना है एट द सेम टाइम आपको जो है वो उसी एंथुजियाज्म उसी एनर्जी के साथ आपको एंटरटेन भी करना है लोगों को बट एज आई सेड कि स्ट्रगल है तभी तो मज़ा है और तभी जो है वो एक पैशन जिसमें आपका है वो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है तो आई आई थिंक कि ये पैशन के साथ साथ जो है काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रही है अभी तक और आई बिलीव कि आगे और भी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है Perfect. Sikhwarrior, how has your journey been? I know Sikhwarrior also is one of uh, the people who I have interacted with even long before he even got into streaming. A lot of conversations we had when he used to competitively play CS:GO back in the day as well. So, how has your journey been, Sikhwarrior? And what is your perspective on what is it like to be a PC streamer today in India, which is a mobile first country? I feel we had the advantage of being exposed to such high quality games in the first place, like in back in the days when we were having our college or maybe school. So that motivated us to buy a PC, buy a console, or buy something which is capable of playing these games. Now the problem realizes कि people don't know about these games. अभी majority in India, they don't know about these games. They exist or how easy it is to buy a PC now or maybe a gaming device which can play all these games. So the lack of what do you say knowledge is basically there in this mobile driven country, but it will change. They will mature. A lot of those gamers will mature and those numbers will replicate in the future. But to be fair, if we are expecting those numbers right now, so it's not a fair deal. Because we all know they are still young. And I think that's Especially, very fair. no, especially Yeah, yeah, Zen. because, the game just came back and people are hyped about it. So, अभी तो है थोड़ा struggle तो है, but manage कर रहे हैं हम. Struggle I think तो बात what नहीं हो रही मेरे हिसाब से. Like uh, struggle, yeah, of course it's gonna be there. The struggle तो उन लोग के लिए भी है जो mobile Yeah, gaming करते struggle हैं, तो जो mobile सभी में करते content हैं, creation true. कर रहे हैं. There are so many content creators in the mobile space as well, who are grinding since last couple of years, and maybe they must have done like more. They must have put more efforts than every one of us here, but they haven't seen growth in any segment, like whatever live streaming or video content creation. So grind हर जगह होने वाली है. It's just that we entertain a niche audience, and I think we have done a really good job at capturing this audience that is there for PC gaming. So it's a complete, like it's a different genre. You can call it a different genre, and I think Yeah. किसी को भी बोलना कि you're like missing out on this audience or it's a struggle. No, you can't say that it's a struggle if you're like above 1 lakh subscribers in this space. It's still good. perfect. And I think
everyone resonates with what both of y'all mentioned. I think Sikhwarrior brought up a key point that PCs are expensive, and they were even more so inaccessible, I'd say, back in the day. So very few people actually got the opportunity to own one and put time into PC games. And I think primarily the interest stems from the fact that you play PC games, you love PC games, and now you want to consume this PC game content around you as well. Also, what Hydraflick mentioned, it is a grind, right? So over time, you guys are here today because you are the OGs. You guys have put in a lot of effort over time to get here, and I think that is something that I think a lot of aspiring streamers will have to do over time. There is no shortcut, and it is. A lot of effort that you need to initially put in to build those communities like you guys have, and after a certain point of time, when you have sizable communities like Hydraflick mentioned, it becomes a lot more easier, and you have a bigger audience to cater to a wide variety of content. So moving on, talking about creating content, what according to you are some of the key things to keep your audiences engaged? We'll start with you, Zaya. I feel like you should have some variety in your content. I feel like that's when people will like. I mean, you can do the same thing like a lot of other streamers as well. They do. So then like people can come back. They know what to expect. But I feel like you should have that variety so that people are always like, oh, what is he or she gonna play today? You know, to have that excitement. And I feel like for me personally, I feel that way. I don't know about others, but yeah, there should be some variety. Obviously, engagement. You need to be interacting with your audience a lot, like not just on streams, but outside streams as well, like on Instagram. There's so many ways now, like there's Discord, Telegram. There's so many ways that you can interact with your audience. So definitely you should be using those as well. And yeah, I feel like I want to hear what you guys also have to say, like to add on to this. I feel like these are like the main things for me personally. Yeah, Okay. I'll go ahead. So to entertain and keep the audience engaged, my way of doing this is basically to uh, put everyone in a journey with me when I'm creating content. Like there should be a goal that I want to achieve, and I don't want my audience to feel like they're not a part of it. I want them to feel like they're a part of it. They're in this journey with me, and I will give my best to achieve it, and they will support me, and their support means a lot. So basically, they must know that their support matters, and that way they stick around through all the challenges that I take. Basically, my way of content creation is taking up challenges and trying to be the best at whatever I do. And with that, my audience also supports me because they get the sense of uh, being in this journey uh, with me. So yeah, that's my way of doing things here. Perfect. And of course, for someone who has followed you as well for a long time now, we discussed this before the start of the podcast as well. Uh, I've always primarily known you as someone who plays a lot of FPS, and to have you see create content like uh, go only up, if I've got the name right, I thoroughly enjoy it. So I think that's like you mentioned and Zaya mentioned as well, to keep things change and to have a lot of fresh content coming in is definitely one way of achieving that. Uh, True. the Gamers Toys, your perspective on someone who does simulation games, but a lot of variety there as well. एक्चुअली किरण भाई जब भी कंटेंट की बात आती है मेरी सबसे लाइक हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं कितना एंजॉय करूंगा उस कंटेंट को आई स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि डजेंट मैटर ट्रेंड में क्या चल रहा है बाहर कौन से स्ट्रीमर क्या खेल रहे हैं अगर मैं उस कंटेंट को एंजॉय नहीं करूंगा 100% मेरी ऑडियंस उसको नहीं कनेक्ट कर पाएगी क्योंकि देखो एंटरटेन करना भी एक स्किल है ठीक है इट्स नॉट लाइक कि हर एक बंदा एक अपनी पर्सनैलिटी लेके आता है तो आपको पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि
आप किसमें अच्छे हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आप बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, और उसके लिए आपको वो पसंद आना चाहिए। अगर आप गेम को एंजॉय नहीं करोगे बट फॉर द सेक की ई स्पोर्ट्स प्लेयर अगर ग्रो कर रहे हैं स्ट्रीमिंग या गेमिंग सीन में, तो मैं भी जो है वो जबरदस्ती ई स्पोर्ट्स करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक गेम के अपने स्किल्स होते हैं, हर एक जॉनरा के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी लाइक एक टाइम पे पता है हमें पूछा करते थे रिलेटिव्स की, यार बेटे की 12th हो गई है, अब उसको कौन से स्ट्रीम में डाले, क्या आजकल ट्रेंडिंग में है। एक टाइम में जो आईटी ट्रेंडिंग में हुआ करता था, तो मैकेनिकल वाले भी आईटी में जा रहे थे, जिनको कॉमर्स अच्छा था, मैथमेटिक्स अच्छी था, उनको भी आईटी में डाला जा रहा था। आज के डेट पे मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि उस बच्चे को क्या पसंद है वो पूछो। इफ यू गुड इन दैट जॉनरा ही विल गोना सक्सीड, डजंट मैटर कि वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है। सो यू हैव टू यू हैव टू बी बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप देखो कि ये गेम आप कितना एंजॉय करोगे। अगर आप एंजॉय करोगे ना, आज नहीं तो कल वो गेम ट्रेंडिंग है या नहीं है, आपको उसकी ऑडियंस मिलेगी। बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया की ऑडियंस, फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स यार इंडियन कंटेंट, इंडियन इंडियन मतलब फूड हो गया या फिर म्यूजिक हो गया या फिर बॉलीवुड हो गया, उस पर कंटेंट बना रहे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि हमारी ऑडियंस है। तो बस आप उसको एंजॉय करो, ऑडियंस विल गोना फॉलो यू सूनर और लेटर। Absolutely. Sikhwarrior, I know for a fact I primarily know you for doing a lot of FPS titles and playing them. But I also know that you had very successfully dabbed in GTA roleplay as well for a long time. So, so what is it that are some of the key things that you do to keep your audiences engaged? इट्स द सेम थिंग, लाइक मुझे मजा आ रहा है तो उनको भी आएगा। इट्स ऑल द सेम। अब अगर समथिंग इज न्यू फॉर मी तो मुझे मजा आता है, बट इफ इट गेट्स वेरी रिपीटेटिव एंड आई हैव टू डू इट बिकॉज हाँ उसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर मेरे को मजा आना बंद हो जाता है। एंड वहीं पे एक दिक्कत है, वहीं पे मैं मात खा जाता हूँ। Because YouTube पे what works is repetition. Like you keep on doing the same thing, and then your whole channel or your whole streaming thing will only be dedicated to those certain titles or certain games. But agar you play something different every time, maybe every month or something, so it doesn't work out. But we are, doing it नेवरदलेस। मजा आता है। एंड कंटेंट क्रिएट करते वक्त बस यही दिमाग में रहता है कि इफ आई एम एंजॉयिंग इट तो फिर तो व्यूअर्स को भी मजा आएगा। बी इट एनी गेम, लाइक अभी करंटली आई एम प्लेइंग RDR2। आई नो RDR2 बहुत पुरानी गेम है, एंड व्हेन इट फर्स्ट लॉन्च्ड इन बैक इन 2018 आई प्लेड इट, और उस टाइम आई स्ट्रीम्ड इट, और पीपल वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, ऑल्दो द गेम इज सेम। But today, people are interested. Now, what tells you about the people? ये इससे क्या पता चलता है? It's all about knowledge and showing them what possibilities are. Right. Uh, Zaya and Hydraflick, both of you mentioned about doing different types of content and using different platforms, right? This one's for everybody. How has I know you've all of you have dabbed and experimented with content like vlogs. Yeah. Has that worked for you? I want to hear your stories regarding that. We'll start with Uzziah. I feel like vlogs for me have. I was surprised actually because I was never, that, vlogger kind. I'm actually even very shy to vlog in public. But I tried out vlogging a few times and it was actually received well. Like it was doing even better than my other gaming videos. So I was like, maybe there's something to it. So I started doing more and more. And yeah, people do like that. They want to see more of your life because see, for me is the thing is I want my audience to come for me and not for like a specific game. Gaming to hai hi, but I want them to come for me, like my personality, and what I can bring to a game when I'm playing it, how I can entertain them. So I feel like they like knowing more about my life, what's going on and what's happening. So that's why I feel like vlogs definitely do work. And yeah, for me it's been great. I want to keep doing more vlogs, Abhi. Now it's like before we used to just play games, stay at home all day, play games. Now it's like यार अब vlog करना है, बाहर जाना पड़ेगा कहीं. So वो सब भी एक नया like has come up in our lives. So
अच्छा है, व्लॉग्स मैंने डेफिनेटली देखी डू है वर्क। स्ट्रगल्स आया कि हम दोनों ने बहुत व्लॉग स्ट्रगल किया हाँ, व्लॉग्स करने में व्लॉग करने के लिए आई एम लाइक व्हेनेवर कैमरा निकाल क्या के ऐसे करना पकड़ने को चाहिए फिर शर्म लगता है एंड देन फिर कभी व्लॉग जब यू भी नो इवेंट्स पे होता है हाँ, आई वाज़ जस्ट कमिंग ऑलवेज टू सो दैट। डिफिकल्ट या बिकॉज़ आई रिमेंबर ऐसा इवेंट होता है कभी-कभी एंड देन वी आर लाइक मेरे को व्लॉग करना है बट कंटेंट नहीं मिल रही है यार, क्या व्लॉग we करें? तो आई both एम go लाइक we हाइड्रा both go our ways we both go our ways या Zaya will do something else I'll do something else and then we'll या meet after an एंड hour देन वी विल कम vlog बैक hua या हाँ, vlog hua शूट हुआ? I'm like नहीं यार मेरे से कुछ रिकॉर्ड किया या मुझे एंड like देन shit हमें vlog करना है Yeah, and then if sometimes he records something interesting and then I'm like मेरे को ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है I'll be like हाइड्रा कहाँ पे जाके ब्लॉग किया यार कहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है यार he'll be like अरे उधर जाओ वो hmm. बूथ पे मस्त चीज है I'm like okay चलो जाते हैं so yeah it's fun it's very fun Is that something that you strategize together? Like I'm guessing both of you have vlogged together at events previously. Is that something that you have a chat about before and say, hey, uh, ये कर लेते मजा में, together, and this is something you can do. This is something that I will cover, but we will do both of these pieces together. Is that something that you explore as well? it's we more I mean like it's on the yeah it's spot थोड़ा right it's on the हाँ spot हाँ it's on the मतलब spot Uh, but you know I know a lot of creators who actually do that. uh-huh. So it's like another type of vlogging, you know, they'll be like, they'll pretend it's happened naturally, but it's actually planned beforehand. Even, I mean, people like that kind of content as well. Like, kuch bhi entertaining ho works in I the mean, end. it's fun. It's not like they're scripting it. It's just Yeah, to make the vlog more fun. So no negativity exactly. around that. Like in that tone, Exactly. don't find it negative. It's good only. It's Mm. very It's good entertaining only, the yeah. way they do it. Yeah. But for me, I'll start like मैं vlogging नहीं करता हूँ. I can't vlog. I don't feel comfortable vlogging in public. I can't hold the camera and speak because usually what I do is Kiran knows I fumble. So I don't like doing retakes in public. It's like, hey guys, welcome back to my vlog. Today we'll be going to this event, and then I fumble, and then like, oh, लोगों ने तो मेरे को एक बार ये बोलते हुए सुन लिया. अब मैं वापस ऊपर करके बोलूँगा, hello guys, welcome back to us. तो वो थोड़ा weird लगेगा. So I don't, and then I find another place, and then I fumble there, and then I find another place. So I keep doing that. I don't want to do it. मेरे को नहीं करना vlog. It's not my Struggle style. I found a different way to do that, and that is IRL. So I'll basically hook up a small camera, and I'm more comfortable doing it live. Like मेरे को कैमरा पे रिकॉर्ड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता. Everything that I've done mostly is live. हमेशा Yeah. एक बार कैमरा चालू हो गया then just do whatever you want and make content out of it. So I took the same approach vlogging के लिए. So I got a nice small little GoPro hidden. Nobody can see it. It's on my backpack here, and then I can just have fun, be myself, and not get noticed by a lot of people in public while I'm making content. So I found another way to do that, which I haven't been doing since last couple of months because I have been not traveling much. I've been home, but yeah, I'll definitely do it again Trip when I plan travel. करते हैं guys हम सब हाँ, ट्रिप प्लान करना पड़ेगा. vlog के लिए. ट्रिप प्लान करना पड़ेगा. True. A lot of vloggers do plan Yeah, trips just to vlog. Yeah, yeah. yeah. So the Gamers Toys, your vlogs are very different to what other gamers vlog. There's usually a couple of types of vlogs that they do. They either do their life driven travel vlogs. There is also vlogs when it comes to certain events that they vlog from. You have seen vlogging around content that is directly related to the games that you play. So how has that worked for you? Fortunately, unfortunately, see, मेरे majority of simulation games है, those revolve around aircrafts, train, Yeah. bus, trucks, and all those stuff, right? और जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली आप इधर लाइक ट्रेन से ट्रैवल करोगे, बस से ट्रैवल करोगे, एयरक्राफ्ट से जाओगे, तो इन दैट सेंस लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो मैं लाइक जैसे हैदराबाद जाया ने कहा, लाइक 3 or 4 years बैक आई यूज टू लाइक मैं भी थोड़ा सा शर्माता था यार कि यार ऐसे पब्लिक में कैसे कैमरा. और उस टाइम पे तो लाइक आई एम अ ह्यूज केसी नाइस्टेट फैन, तो मैंने उसको देख के कैनन 80D लिया था और पूरा बड़ा सेटअप लेके मैं घूमता था. तो यार मेरे फोरआर्म भी जवाब दे देते थे उसको होल्ड करते वक्त. तो मैंने कहा यार अगर ब्लॉगिंग करना है तो बेशर्म होना पड़ेगा. आज के डेट पे कहीं पे भी खड़ा कर दो, बेशर्मों की तरह मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ. लिटरली आजू बाजू वाले थोड़ा सा ऑकवर्ड फील के हट जाते हैं यार. मैं वहां पे अपना
ढीठ बन के मैं कर यही लेता हूँ। चाहिए भाई मैं बस। सिनेमैटिक मार लेता हूँ वहाँ पे यार, रख के कैमरा वहाँ से एंट्री विंट्री डबल एंट्री वगैरह कर लेता हूँ। तो करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपको लाइक कंटेंट क्रिएटर बनना है एंड आई डू एंजॉय। ऐसा नहीं कि मैं फोर्सफुली करूँ, क्योंकि अगर मैं फोर्सफुली करूंगा वो आज नहीं तो कल वो दिख जाएगा और फिर पीपल विल से कि यार ये मजा नहीं आ रहा, ये 50 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के, वो तुरंत आपके कमेंट में दिख जाएगा। तो अब तो मैं एन्जॉय करता हूँ, बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्लॉग एडिट करने में मुझे मौत आती है। वो मेरे से होता नहीं है। और व्लॉग का कैसा सेम। है ना कि जब आप व्लॉग बनाते हो ना, आपके दिमाग में एक स्टोरी चलती है। आप ना प्लान करते हो कि हर एक शॉट के पीछे एक रीजन होता है कि मैंने ये शॉट क्यों लिया हुआ है, मुझे यहाँ पे ना डालना है उसको। तो ना व्लॉग अगर आप खुद एडिट करोगे ना तो ही वो लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप वो एडिटर से एडिट नहीं करा सकते। सो मेरे इस एडिटर से पे एडिट मेरे ये भी पीसी नहीं में करा सकते क्योंकि पर्सनल हो जाता है हाँ ना, व्लॉग इज समथिंग हाँ पर्सनल। हाँ तुम बहुत एक्चुअली सारी चीजें एक्चुअली रिकॉर्ड करते हो जो तुम शायद एडिटर को ना दिखाना चाहो। ट्रू। तो यही प्रॉब्लम है यार कि और एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा लाइक स्ट्रगल है। तो रिसेंटली अगर आपने किरण पे अपने चैनल पे देखा होगा तो बीइंग अ लाइव स्ट्रीमर आप मुझे बोलोगे कि यार फ्लाइट सिम कोई भी सिमुलेशन गेम्स की या वैरायटी गेम्स की आप वीडियो बना के डालो, एडिट करके डालो ना, वो होता नहीं है। हम लाइक मूवी स्टार नहीं है, हम लोग थिएटर एक्टर्स है। हमें लाइव चाहिए, कैमरा ऑन करो, हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे। हमें ये रिटेक वाला सिस्टम पसंद नहीं है। एट द सेम टाइम फिर अब व्लॉगिंग का नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट मैंने यही किया है कि मैं आईआरएल करता हूँ। अब मैं पुणे स्टेशन पे जाके कैमरा लगा के मैं 4 घंटे बैठे रहता हूँ स्टेशन पे, ठीक है, और वहां पे मैं बातें करता हूँ ट्रेन आने के पहले, और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 5G है, वो कहने के लिए है। आज जो डाउनलोड स्पीड हमें दे रहे हैं 200 Mbps, बट अपलोड स्पीड है ही नहीं है। अपलोड स्पीड आज भी वो 10-15 Mbps में स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि आईआरएल इज द फ्यूचर ऑफ व्लॉगिंग बेसिकली। आगे जाते जाते जो है वो ऑफलाइन व्लॉग्स बहुत कम होंगे, आईआरएल व्लॉग्स जो है वो ज्यादा आएंगे एंड इट्स मोर फन। एंड बीइंग अ स्ट्रीमर मुझे लगता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये चीजें, और जैसे आपने कहा कि मेरा कंटेंट, तो एज आई सेड कि वो फिर मैं काइंड ऑफ कोई ना कोई स्टोरी लाइन डाल देता हूँ कि आज हम लोग जो है वो लाइक एयर इंडिया का बोइंग 747 जो कि एक क्वीन क्वीन ऑफ द स्काईज कहते हैं और जो कि काफी रेयर एयरक्राफ्ट है, हम उसको आज स्पॉट करने के लिए जा रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ एक मैसेज भी चला जाता है, एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है व्लॉग में, तो लोग जो है वो काइंड ऑफ एंजॉय करते हैं। बट या एडिटिंग इज लाइक स्टिल बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर क्रिएटर्स लाइक मी कि व्लॉगिंग रेगुलर नहीं हो पाती। Right. And I think that kind of resonates also with the fact that, like you and Hydraflick mentioned, you've built your audiences through live streams. And to have that live stream aspect of being able to have that conversation with your audiences in live when it comes to doing IRL streams, I think that just keeps that very important part of why your audiences love you also in the picture while you do try out different kinds of content. So I can completely understand on that as well. uh, Sikhwarrior, I have seen a couple of your travel vlogs as well. So is that something you plan to dab in a lot more, or are you planning some different kinds of vlogs? How has it worked for you? Actually, I just vlog to create memories. Like it's not for getting viral or something like that. Like जब आप जाते हो कहीं बाहर तो आपको फोटोज और वीडियोस खींचना तो पसंद ही है, तो आई वांट टू क्रिएट दोज मेमोरीज एंड सेव इट ऑन यूट्यूब सो दैट आई नो ओके हम लोग यहाँ गए थे, बाली गए थे, ओके सिंगापुर गए थे, या मे बी हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वट एवर। सो इट्स मोर लाइक अ मेमोरी। बाकी व्लॉग करते वक्त आई फील you need people around you so that it becomes very interactive. जब आप अकेले जाते हो कहीं तो मुझे पता नहीं ऐसा फील नहीं होता है कि मैं व्लॉग में क्या ही कर दूं। लाइक either you explain stuff to people or I don't know, like it's not my cup of tea. बहुत ज़्यादा लोगों के अपने अपने अलग अलग स्किल्स होते हैं, एटलीस्ट मेरे तो नहीं है। हाँ, बट व्हाट आई लव इज बीइंग लाइव। लाइक जैसे आप लाइव होते हो तो यू हैव पीपल टू टॉक टू यू इन द चैट, तो उसका आप रिप्लाई देते हो, फिर वो एक कन्वर्सेशन चल रही होती है एंड दैट कन्वर्सेशन नेवर स्टॉप्स बिकॉज न्यू पीपल जॉइन इन द चैट। सो आई फील दैट वे आईआरएल और मे बी लाइव स्ट्रीम्स और ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। बट वही है, आईआरएल का इंफ्रास्ट्रक्चर एज चीकी भाई सेड इट्स नॉट देयर। लाइक अगर आप अभी कहीं भी फॉर अपने यू शहर से ही कहीं आउटर में चले जाओ या कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर थोड़ा सा वीक रिसेप्शन है, तो खत्म, आईआरएल नहीं हो पाएगा। इवन इवन आई वेंट टू सिंगापुर, ठीक है, इट्स नॉट इवन इन इंडिया। चीकी भाई, मैं सिंगापुर गया एंड
supposedly Singapore is very advanced, right? And वहाँ मैंने 5G का सिम लिया, 5G रिचार्ज कराया, and I was like getting two bars, और उसमें क्या ही स्ट्रीम होगी, बार बार आ रहा है रिसेप्शन, जा रहा है रिसेप्शन, तो I was disappointed there as well. तो इसीलिए स्ट्रीम्स भी कट शॉर्ट भाजी करनी उसके पड़ी लिए 1 IRL. लाख का खर्चा करना पड़ता है। 1 लाख से 1.5 वही लाख तो. का खर्चा करना पड़ता है। लाइव यूज़ सोलो खरीदो, अगर आईआरएल करनी है हाँ. तो वो तुम्हारे 4 सिम कार्ड का पावर एक में डालेगा, फिर बैंडविड्थ खर्च कर देगा, यस. खर्चा भी तो कितना पड़ेगा, लाइक एक सिम कितने का, फिर 4 सिम, बाप रे बाप. हाँ, और It's टिकट like का अलग काटो, another तुम्हारा thing. तुम्हारा Ticket का आईआरएल अलग. कंटेंट का आता है वैल्यू निकल के 2 लाख रुपए। Exactly. पहला, फिर So उसके बाद ऑफ अभी, कोर्स इट्स एन इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन जब यूज़ इट एनी जब टाइम यू वांट। तो ब्लॉग का तो यही सीन चल रहा है किरण भाई. So तो I इतना तो guess कह सकते हैं I ना think it's common कि हम consensus. सारे ब्लॉगर्स, लाइक आई थिंक सिर्फ चीकी भाई यहाँ पे ब्लॉग करते हैं खुल के, बेशर्मों जैसे। हम बाकी काफी बाकी शर्मीले थोड़ा गेमर्स हैं। हमारे थोड़े आइडियाज डिफरेंट है ब्लॉगिंग को लेके। I feel मैं तो like कहता हूँ हम यार लोग ब्लॉगिंग लाइक हर लाइक वी what? आर गेमर्स राइट नाउ। हाँ, गेमर्स आर गेमर्स, लाइक दे नॉट ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, वो वाले फील्ड में, वो वाले niche। तो वी आर काइंड ऊपर से ऑफ डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग आते हैं। सो व्लॉगिंग कुछ कुछ अभी नया नया लाइक पिकअप हो रहा है, बट मैं आई वुड लाइक टू स्टिक टू माय गेमिंग कंटेंट ऑलवेज। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर व्लॉग से मांगते भी लोग तो हाँ। जिन्होंने ब्लॉगिंग का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करा है ना, they started expecting vlogs from their vloggers every day because they want to watch. सबको चाहिए डेली व्लॉग्स, ये चाहिए. एंड हम्म, उन्होंने भी, जो क्रिएटर्स व्लॉग करते हैं, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी अपने ऑडियंस की, वो डेली व्लॉग्स डाल भी रहे हैं. एंड इफ इट्स लाइक इफ वी इट्स वन लाइक व्लॉग इन अ फ्लाइंग मंथ बीस्ट और को मे बी देख 2 के, मंथ, भाई. इट्स लाइक अरे फ्लाइंग बीस्ट को पीसी देख के हर गेमिंग पायलट को तुम या मैसेज कर रहे हो कि तुम ब्लॉगिंग चालू करो ना। भाई, हम लोग 10-10 घंटे यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हैं, व्लॉग किस चीज का करें? सारा चीज तो कैमरे में ऑलरेडी है जो हम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे. वही वही। I think that is primarily because now through vlogs you've exposed a very different part of your lives to your audiences, and that is once they pick up on that, I think that is something they want to stay updated on. Uh, you as personalities outside of your live streams as well, and I think it does somewhere get to a point where you kind of have to balance the two out. And like Sikhwarrior said, a lot of you stream a lot of content very regularly, and often it is over long hours, so it becomes very hard to kind of put a lot of effort and time into creating these vlogs, as opposed to maybe just doing IRL streams on and off. So I think we are in common consensus there. Let's move on to something that we touched upon a little earlier. There's your audiences which are primarily consuming PC game content, and then there are audiences consuming rather mobile gaming content. Uh, One thing, of course, that you guys mentioned earlier was that the audience size is different, but another thing that is different is the audiences in itself are very different. The ones who consume PC game content as well as the ones who consume mobile game content. So I want to understand from y'all how different are your audiences from that of mobile game streamers. We'll start with you, Zaya. I know this is a great question for you as well because though you predominantly stream PC games, I know you've also dabbed into streaming mobile games and still continue to do it on and off. So I'd like to understand how your audience is different and how they have been accepting of the mobile game streams that you have done and continue to do. I feel like it's always like a conflict, you know. Like if I stream PC games, there are those people who are like, "Arey, BGMI khelo, BGMI khelo." And then if I stream BGMI, then like half the people are like, "Arey, what are you playing? Play Valorant, play some other like PC game aisa." But then there are those good
bunch of people as well who accept anything. They come for me. They are like, जो भी game खेलना है खेलो, हम बस आए like entertain होने. But yeah, like I don't know. मतलब मैंने जितना ऐसे notice किया है, usually like the mobile centric audience, they like they're very demanding. They're like mobile गेम, ये BGMI खेलो, BGMI खेलो. एंड बाकी सब अपने पीसी वाले चिल है मस्त रहते हैं वो लोग. दे आर लाइक ठीक है, कुछ भी खेल लो चलेगा. मतलब इतना तो मैंने ऐसे नोटिस किया है. एंड अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ डिवाइड एज सच. लाइक जितना मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो अबाउट अदर्स अगेन, मैंने जितना नोटिस किया है, दे आर ऑल द सेम. लाइक कुछ भी चलता है उनको. एंड या टॉक्सिसिटी के बारे में भी बात करें तो आई फील लाइक इट्स सेम ओनली. ऐसा नहीं बोल सकते कि मोबाइल ऑडियंस ज़्यादा टॉक्सिक है या पीसी ऑडियंस ज़्यादा टॉक्सिक है. वो टॉक्सिक वाले कुछ कुछ तो रहते ही है. बट ओवरऑल इट्स ऑल गुड. आई मीन ऑडियंस तो ऑडियंस है. इट डजेंट मैटर मोबाइल है या पीसी है. हमको वी हैव टू एंटरटेन एवरीबडी द सेम. सो या, व्हाट अबाउट यू गाइस? हाइड्रा? काफी काफी डिप्लोमेटिक आंसर. अब लाइक ऑनेस्टली अब आई डोंट देखो नो बहुत ही मैन. काफी डिप्लोमेटिक आंसर और काफी हाँ. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. हाँ, क्या एग्जैक्टली. मोबाइल और पीसी की ऑडियंस डिफरेंट है, और अगर है तो कैसे है? तो वैसे तो मेरा भी मन करता है कि मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर देके कंट्रोवर्सी ना करूं, बट डेफिनेटली डिफरेंट है. No, इन no, टर्म्स we have ऑफ only इन space for टर्म्स one ऑफ diplomatic answer. So Hydraflick, you have to go the other. Now you. in terms of Zaya's already the catered to type, that. yeah, in types of like what sort of content they like to consume. Mobile gamers like to consume a very different kind of content than what we produce, and it's more like family friendly, I would say, अगर तुम देखने जाओ तो. And it's less like, यार डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा यार मुझे यहाँ पे. बस I नहीं बोल told you. सकता मैं. See, now you know. I get what you're बस trying to उतना ही say, रखो. It's but different. It's it's different. different. They are different. And I like the PC audience more because I can relate to them more. Like mobile Hmm. gaming audience ठीक है, you guys are good, okay, you guys are good. But PC gaming audience से मैं ज़्यादा relate कर सकता हूँ because they understand the games that I play, they understand the mechanics of the game that I play, and if I do something in the game, they can recognize it कि हाँ ये कुछ नया trick कर रहा है जो मैं जानता हूँ ये करना है, मतलब मैं जानता हूँ कि ये exist करता है. Whereas Hmm. mobile gaming audience can only understand what's happening in the mobile space. So I relate more to the PC audience. That's why I like to cater more to the PC audience. That's my I guess diplomatic it answer. goes the same as well कि like मोबाइल गेमिंग के ऑडियंस हमसे कम रिलेट कर पाते हैं कभी कभी. That's why you get what I'm saying. जैसे तुमने बोला कि we can relate more to the PC gaming audience, वैसा ही. Yeah, and I relate to the audience which is like मेरी age की ज़्यादा. So Hmm. क्या that's बोलना And also चाह one रहे हैं thing, आप? right? ever since I Never mind. Let's move on. I, I know Hydraflick is waiting to say something. I'm gonna So give हाइड्रा ने you यहाँ पे a ना few डिप्लोमेटिक more आंसर दिया है ना कंट्रोवर्शियल आंसर दिया है. हाइड्रा ने हाँ, आंसर ही इसे नहीं कुछ दिया है यहाँ मिक्स पे. दिया है. हाँ. पता नहीं कहीं पे बीच में ही रुक गया है वो. वही आप मैं बोलो वो भाई. वो व्हाइट लाइन पे रुका हूँ. मैं वो व्हाइट लाइन पे रुका हूँ जिसके आगे मुझे जाना नहीं चाहिए. तू दे दे गालियां Yeah. हाइड्रा, आज हो जाने दे. अरे यार खुलासा. क्या बात. I know for a fact, ever since I've asked this question, GamersToys has been cracking his knuckles. He's just waiting, like, नहीं 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 to say यार, ऐसा something नहीं about है. this. And I know this is a conversation we've had a lot of times as well, Chiki Bhai, in understanding like how our audiences are very different. Your audiences rather very different to what say mobile streamer audiences bring in terms of something we've discussed is spending power is one of the topics also that we've talked upon. So you would be the best person to elaborate on that. How are your audiences different to that of the mobile game streamers?
यार किरण भाई, यहाँ पे ना मैं ये लाइक मोबाइल वर्सेस पीसी नहीं बताना, बात मतलब कहना चाहूँगा। सो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप चैनल ओपन करो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो लाइक ऑफलाइन कंटेंट क्रिएटर हो या फिर लाइव स्ट्रीमर हो, यू ऑलवेज शुड बी इन द मास्टर सीट, ठीक है? आपको स्टार्ट से ड्राइव करना है आपके चैनल को। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स इन इंडिया जो कि व्यूअर्स ड्राइव करते हैं, और वो ड्राइव हो रहे हैं 3-3 4-4 सालों से। और एट सर्टेन पॉइंट जो है ना, वो काइंड ऑफ एक हैरेसमेंट हो जाता है, वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को शिफ्ट होना है, उन लोगों को कुछ अलग करना है, बट देयर ऑडियंस आर नॉट नॉट लेटिंग देम टू डू दैट। देयर ब्रांड्स, देयर एजेंसीज आर नॉट लेटिंग देम टू डू दैट। देयर लाइक, यार हमने आपके लिए ये गेम देख के ब्रांड लाया हुआ है, प्लीज डोंट स्विच। और जब आप उस पोजीशन में जाते हो ना, तो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ से आपके चैनल को आगे लेके जाना। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ, तो जब व्हेन आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, इनिशियली मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसे-ऐसे मेरे इस जॉनरा में मुझे जाना है, बिकॉज़ आई एन्जॉय दैट जॉनरा लाइक बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से मैं उसको फ़ॉलो करते आ रहा हूँ। तो मैंने आदत ही वैसे लगाई कि आई नो कि मेरी अभी 5 वॉचिंग आने वाली है अगले 6 महीने तक, क्योंकि आई नो कि ये नीश, ये जो जॉनरा, ये काफ़ी लाइक नहीं पता लोगों को, लेकिन नॉर्मल पीसी गेमिंग में ही प्रॉब्लम आ रहा था। फॉरगेट अबाउट लाइक उसमें भी आप हार्डकोर सिमुलेशन गेमिंग में जाओ, तो इट टूक अ टाइम, बहुत टाइम लगा लोगों को एक्सप्लेन करने में, वैसी ऑडियंस तक पहुँचने में। क्योंकि अगर आप इंडियन गेमिंग सीन की बात करो, तो लिटरली आप 5 या 6 गेम गिन सकते हो, यू कैन काउंट दोज़ गेम जिस पे 95% कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अगर आप किसी और कंटेंट में जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना है। बट अगर आप जो जो करना चाह रहे हो आपके चैनल पे, जो आपका विज़न है, अगर आप लोगों तक सही तरीके से अगर कन्वे कर पाओगे ना, इवेंचुअली वो बिल्ड होते जाता है, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। इट विल टेक सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम, बट इट हैपेंस इवेंचुअली, क्योंकि इंडिया में ना हर तरह की ऑडियंस है। आपको और मुझे पता है किरण भाई, जब हम लोग ये ई स्पोर्ट्स, जो रेसिंग ई स्पोर्ट्स को लेके जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ भी इवेंट करते हैं, crazy amount of like crazy amount of people are there जो कि they are into the esports racing. They are like crazy about Assetto Corsa and the like I racing and all those stuff. वो YouTube पे क्यों नहीं आ रहे? वो बड़े स्ट्रीमर को आके क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में अभी तक वो गेम आई नहीं है। मेन सीन पे वो गेम आए ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे आदत डालते हो व्यूअर्स को, कि आप क्या खेलते हो। अगर आप लोगों से ड्राइव होना चालू करोगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है आपके चैनल को कंट्रोल में रखना। तो मुझे लगता है कि इट्स यू कि आपकी ऑडियंस कैसी रहेगी। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ ओनली, जो आपको आपके You व्यूअर्स में have दिखता है। to keep the attitude कि तुम ले आओगे वो गेम कंट्री में। एक हाँ, राइट, उसको टाइम लगता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया में टाइम नहीं है। लाइक सोसाइटी प्रेशर है, पेरेंट प्रेशर है, और अगेन लाइक जो इकोसिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, वो काफ़ी, आई विल से लाइक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट वो काफ़ी गलत ट्रैक पे है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम कोई डिफरेंट लाइक पॉइंट में लाइक उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगेन रही बात वो मनी स्पेंडिंग ऑडियंस की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमुलेशन गेम, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन की बात होती है, तो इस पे लिटरली 1:1 रियलिज्म है। जो पायलट रियल एयरक्राफ्ट में बैठ के जो चीजें करता है, वो हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं। रियल रियल पायलट्स आर टीचिंग अस हाउ टू फ्लाई, क्या क्या चीजें करनी होती है। तो जब एक नॉर्मल व्यूअर आता है, तो इनिशियली वो देख के बोलता है कि यार मैं इतना देर बैठ के एक एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होते हुए क्यों देखूं। वो आता है पहले दिन, और वो 2 मिनट ही टाइम कंज्यूम करता है आपके चैनल पे। बट अगेन उसको कल दूसरे दिन रिकमेंड में जाता है, वो 2 मिनट के 5 या 10 मिनट होते हैं। बट इवेंचुअली 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या फिर 6 महीने के बाद, ही अंडरस्टैंड कि कितना मजा है इन सब चीजों में, एंड ही इवेंचुअली बिकम योर रेगुलर व्यूअर और सपोर्टर। तो उसके लिए आपके पास वो पेशेंस लेवल होनी चाहिए वैसी ऑडियंस को अर्न करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पेशेंस इज द की, वो करना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मच्योर कंटेंट है, हमारा एंटरटेनमेंट तो बहुत है उसमें, तो थोड़ी सी लाइक एवरेज एज ग्रुप जो है वो 20 साल से ऊपर का हो जाता है, और वहां से फिर सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। फिर वो दे डोंट डिमांड कि यार लाइक यही खेलो और वही खेलो। दे अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली अ हार्डकोर गेमिंग इज ऑल अबाउट। Yeah, I completely resonate with what you said, Cheeky Pie, because I think I'm one of those people of what you just mentioned, where I used to watch GamersToys streams and enjoy Microsoft Flight Simulator, and ended up going and getting a setup for myself. Played with it for a bit, and then now I had to go back to his streams to now learn how I'm gonna use it. So I think that is a trend One point, Kiran bhai, I also that would I like see to when add कि uh, even I've shown you some messages कि like gamers को yeah. जनरली क्या होता है ना कि like viewers कहते हैं कि अरे मॉम देखने नहीं देती है स्ट्रीम्स, कहती है कि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, पढ़ाई करो। Yeah. सो रिसेंटली लास्ट 6 या 8 महीनों में आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पेरेंट्स सेइंग कि सर थैंक यू सो मच, आपके वजह से मेरे बेटे ने पायलट बनना डिसाइड किया, एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड स्टडी।
कि मुझे पायलट बनना है और तो ये ऐसे कंटेंट में ना एंटरटेनमेंट के साथ एक एजुकेशन फैक्टर भी आ जाता है। और जब वो फैक्टर आता है ना तो Absolutely. काफ़ी आसान होता है लोगों को एक्सप्लेन करना कि भैया ये एंटरटेनमेंट है बट इसमें जो है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आई बिलीव कि अगर आप ऐसी ऑडियंस Absolutely. बनाते हो तो थोड़ा-सा स्लो ग्रोथ होती है बट काफ़ी हेल्दी ग्रोथ होती है आपकी लॉन्ग रन के लिए। Right. Sikhwarrior, uh, your thoughts on how different the your audience, that is the PC gaming audiences, as compared to mobile game streamers? Like I have rarely played a mobile game, so मेरे से खेला नहीं जाता. I just can't focus on I know. small screen. तो I मतलब नहीं है, मतलब मेरा तो ऐसा कोई लिंक है ही नहीं उनके साथ. बट ये है कि हाँ, I just want them to see the potential of the games which we are playing, which we have enjoyed over the years. Like ऐसा नहीं है हमने मोबाइल गेम अपने टाइम पे खेली नहीं है. We have played Mini Militia, Clash of Clans और whatever it was available, Subway Surfer, Temple Run, I don't know. जितनी भी अवेलेबल थी दैट टाइम. बट उसके बाद लाइक जब ये सब गेम्स का एक्सपोजर हुआ ना, just blew my mind. तो just waiting for the day कि जब ये लोग देखेंगे. It's still very, क्या उसको बोलते हैं, नीश. पीसी गेमिंग को भी नीश ही बोलेंगे. When you compare the ratio, like 95% are playing on mobile, 5% are playing on their PC और कंसोल, तो it's still niche. तो जब वो होगा, उसको क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन बोल विकसित होंगे, इवॉल्व तो फिर उसके बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट. फाइन. वी आर देयर, वी आर देयर हम तो रहेंगे ऑलवेज. ही, always, हम yeah. तो रहेंगे. Got it. Before we move on, just a word for all the viewers who are tuning in. Please leave any questions that you want to ask any of uh, our panelists here, and I will pick a few questions at the end and we'll throw it to the panelists. So feel free to leave those questions as we continue our discussion, and we will get to it towards the end of this podcast. Moving on, next one, the Gamer's Toys. This one is for you. Uh, you've had a journey which is kind of in reverse, I would say, to most conventional streamers, in the sense that, people start streaming at a rather early age, and then it develops from there. But you have you had a high paying IT job, you traveled throughout the world, you got married, you had a daughter, and then you picked up streaming, and that too, PC, and that too in a very niche gaming genre, which is simulation. So, how has that been like? यार गेमिंग तो लिटरली लाइक आई रिमेंबर किरण भाई कि मेरा पहला पीसी 1994 में था, पेंटियम 1, विंडोज 95, 32 एमबी का रैम था। रोड रैश के लिए मैंने सिर्फ वो पीसी लिया था। और गेमिंग जर्नी तो उसके पहले से स्टार्ट हुई थी, जब वो ब्रिक ग्रेम आते थे। एक फार्मूला 1 का भी एक छोटा हैंडल डिवाइस आता था, सिख पाजी को याद होगा। एक रेसिंग गेम आता था उस पे। और उसके बाद फिर हमारे मिताशी के जो वीडियो गेम्स चालू हुए, जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रा खेलते थे, डखन खेलते थे। तो गेमिंग जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। और काफ़ी हार्डकोर गेमर रहा हूँ, ऑलवेज़ लाइक गेमिंग ने फ़ैसिनेट किया हुआ है। तो अ, एवरीडे मैं गेमिंग करता था। ऐसा नहीं कि लाइक जब मैंने देखा कि गेमिंग मतलब स्ट्रीमिंग सीन में गेमिंग कर सकते हैं, गेम स्ट्रीम कर सकते हैं, तभी मैंने शुरू किया। ऐसा कभी नहीं था। इवन लाइक जब लाइक शादी हुई थी मेरी, तो लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस में काफ़ी घुसा हुआ था मैं। टाउन हॉल अपग्रेड करना है, आज अटैक करने हैं। 2 अटैक होते थे दिन के, फिर वो कॉल करते थे टीम लीडर, हमारे स्क्वाड लीडर, कि भैया आपका अटैक का टाइम आ चुका है। तो वो हमेशा चलते रहता था। बट देन आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग माय आईटी जॉब, क्योंकि आई वाज़ ऑलवेज़ बीन इनटू द लाइक आर्ट फील्ड में मैं हमेशा था। गेमिंग, डांसिंग और ड्राइंग एंड पेंटिंग, दोज़ वर द थिंग जो कि मुझे एक लाइक जॉय प्रोवाइड करती थी, खुशी देती थी। बट अगेन एज़ आई सेड कि वो टाइम जो था 2000 का, जहाँ पे सिर्फ आईटी बूम चल रही थी, तो सोसाइटी प्रेशर की वजह से जो है आईटी में जाना पड़ा। एंड इवेंचुअली एंडेड अप इन लाइक फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली इन गुड आईटी कंपनी। आई वाज़ इन आईबीएम। सो सब सब कुछ सही चल रहा था। बट लाइक थोड़ा-सा ये होता है ना कि फ़िल्मी लगेगा, बट लिटरली वो आई स्पोक विथ माय वाइफ कि यार मैं नहीं एन्जॉय कर रहा हूँ। लाइक इवन दो आई एम अर्निंग वेल, सब कुछ सही है। लाइक हर कोई जो है ऐसा ड्रीम जॉब लाइक चाहता है कि वो अच्छे इसमें रहे और अच्छा कुछ करे, बट नॉट एन्जॉयिंग। सो व्हेन आई वाज़ इन सऊदी अरेबिया, मैं वहाँ पे रियाद में आई वाज़ ऑन वन प्रोजेक्ट।
देन वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, लाइक मुझे गेमिंग में ही कुछ करना है, आई कांट डू दिस एनी मोर। फॉर्चुनेटली वाइफ भी जो है वो जॉब करती थी, तो थोड़ा सा एक ना लाइक प्लान बी भी था कि ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, कल को अगर चैनल जल्दी ग्रो भी नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि यार अभी खाना कहाँ कैसे खाएँगे, इनकम कहाँ से आएगा? तो ऐसे करते-करते दिन 2016 आई डिसाइडेड टू डू लाइक स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग। उस टाइम पे अगेन एज़ आई सेड कि मैं कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वीडियो एडिट वगैरह करो। एंड लाइक वन फाइन डे आई केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई टोल्ड माय वाइफ कि मैं अभी चालू कर रहा हूँ, आई विल बी ओपनिंग माय चैनल। और उसी साल लाइक मेरी बेटी भी बॉर्न हुई थी। एंड शी वाज़ ओके विथ इट, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना पैशनेट था गेमिंग में। एंड उसने कहा कि यार इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे लगता है कि यू विल डू वेल। सो बट लगा था कि इतना स्ट्रगल नहीं होगा, क्योंकि आई न्यू इट कि मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, डिफरेंट गेम्स ला सकता हूँ। मुझे लगा कि लोग डिफरेंट टाइप के गेम देख के काफी एक्साइट होंगे और व्यूवरशिप मिलेगी, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड जब पबजी आया तब तो भाई लाइक लिटरली सब एक मोमेंट पे खत्म ही हो गया था। मैंने कहा क्या चल रहा है। लाइक आज मैंने सीख पाजी से बात करा था कि 2018 में रेड डेड रिडेम्पशन लॉन्च हुआ था कंसोल पे, प्लेस्टेशन 4 पे, रात को 12 बजे इंडिया में रिलीज हुआ। एंड आई आई न्यू इट कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट जिस दिन रेड डेड रिडेम्पशन लॉन्च होगा मेरा चैनल बूम करेगा, लोग पागल हो जाएंगे रेड डेड रिडेम्पशन देखने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगेन वो 10 की वॉचिंग, 12 की वॉचिंग, 1 महीने तक उसकी पूरी सीरीज कंप्लीट की। बट लाइक चलते गया। और इवेंचुअली 4 साल, 4.5 साल के बाद थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलने लगा कम्युनिटी में ग्राइंड करने के बाद। एंड देन लाइक ब्रांड्स को भी थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ कि नहीं, वैरायटी गेमिंग में भी जो है वो, आई विल नॉट टॉक अबाउट ओनली सिमुलेशन गेमिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैरायटी गेमिंग। 4 और 5 ट्रेंडिंग गेम के अलावा भी जो है वो गेम्स मैटर करते हैं एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। बाकी गेम्स भी कम्युनिटी में होना काफी जरूरी है, वैरायटी व्यूवरशिप होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके ब्रांड्स, एजेंसीज और स्ट्रीमर इन हैंड इन हैंड करके जो है वो एक हेल्दी इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली मतलब 1.5 साल पहले मैंने जॉब लीव किया। एंड लाइक नाउ आई एम अ फुल टाइम स्ट्रीमर। बट अगेन एज आई सेड कि रोज सुबह उठ के ब्रांड डील्स के लिए और इन सब चीजों के लिए आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एजेंसीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि लाइक ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आई बिलीव कि इंडिया में इतने एजेंसीज के साथ बातें करता हूँ, बट देयर आर वेरी फ्यू एजेंसीज जो एक्चुअली उनको पता है कि गेमिंग क्या है। अदर अदर देन दैट लाइक लोगों को बस पता है कि 3 या 4 ट्रेंडिंग गेम कौन से, किसको कितने व्यूज आते हैं, एंड दैट्स इट, उसके ऊपर ही सब कुछ चीजें चल रही है। बट दिस इज नॉट हाउ लाइक थिंग्स विल गो। लाइक दे शुड अंडरस्टैंड कि डिफरेंट गेम खेलने वाले 100-200 वॉचिंग रखने वाले पीसी गेम की ऑडियंस बहुत स्ट्रांग है, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है मार्केट में। दे आर द पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द ब्रांड्स, क्योंकि हमें हमें इतना स्पॉइल किया गया है ना ये 4000-5000 की वॉचिंग में, कि लिटरली 150 की पीसी वॉचिंग को बहुत खराब ट्रीट किया जाता है। ये दिस नीड्स टू चेंज, और ये सिर्फ व्यूअर्स को बोल के नहीं होना चाहिए। इसमें स्ट्रीमर्स, एजेंसीज, ब्रांड्स और व्यूअर्स सब मिलके हमें जो इसको लेके काम करना चाहिए, तभी जाके जो है वो थोड़ा सा हेल्दी कम्युनिटी जो है वो आगे बिल्ड होगा हमारा। आई नो मैंने कहीं और से स्टार्ट किया ना, आई एंड अप समवेयर एल्स, No, no, बट इट्स that is रियली the रियली entire point. इंपॉर्टेंट Yeah, यार, it is ऐसा नहीं good होता है। topic. Good One more point though. point Yeah. I want to That highlight, I don't know whether you will gonna ask me or not, कि मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि ये ई-स्पोर्ट्स गेम होते हैं ना, जो ई-स्पोर्ट्स रेडी गेम होते हैं, those are very like ना properly optimized होते हैं। Like those can run on low end और mid end PCs as well। But जो ये बाकी स्टोरी मोड गेम्स होते हैं, सिमुलेशन गेम्स को, या फिर जहाँ पे एक डेवलपर गेम को डेवलप करता है, एक पब्लिशर उसको पब्लिश करता है, एंड देयर आर 100 अदर स्टूडियोज क्रिएट अ मॉड। उस गेम के लिए जब मॉड बनाते हैं ना, तो वो गेम काफी पुअरली ऑप्टिमाइज रहता है। और वो गेम खेलने के लिए ही आपको 4080 का, 4090 का पीसी चाहिए। वो गेम खेलने के लिए आपको जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के रैम चाहिए, कूलर्स चाहिए, और यू नो हाई एंड प्रोसेसर्स चाहिए। तो वो जो 200 की वॉचिंग है ना, 150 की वॉचिंग है ना, वही आपके कस्टमर्स है जो उन सारे कंपोनेंट्स को परचेस करने वाले हैं, ना कि ऑप्टिमाइज गेम खेलने वाली व्यूअरशिप जो है वो आपके कंपोनेंट्स नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। बट लाइक वो 150 में ना वो बहुत ज्यादा ताकत है यार, कि वो यू नो ब्रांड्स को yeah. काफी ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे। ये एजेंसीज को समझना चाहिए। एंड प्लीज डोंट like look down on the 100-120 watching, go check out the international streamers on Twitch। 120-150 watching को जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलते हैं जहाँ पे डिफरेंट गेमिंग की जाती है। सो दिस नीड टू चेंज इन फ्यूचर, तभी जाके Yeah. नए स्ट्रीमर्स जो है वो एंटर करेंगे कम्युनिटी में, और हम इवेंचुअली कह पाएंगे कि यस, गेमिंग में भी करियर हो सकता है। बट ये सिचुएशन, नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ फुल टाइम करियर इन गेमिंग। I completely resonate Yeah, there. bro. I think, Yeah. Full. and सब now सही Eminem बोला can है. I feel rest. like this goes
in like every one of us like heads every day, you Yeah. know, what he अरे said. जाया लाइक आई जस्ट Perfect. एक छोटा सा Yeah. एग्जांपल देता हूँ लाइक डे बिफोर यस्टरडे मैं एक एजेंसी के साथ बात कर रहा था आई एक्सप्लेन एवरीथिंग दे वर सुपर पम्प्ड अप वाओ भाई बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे आप कॉस्प्ले भी करते हो ओ माय गॉड दिस एंड दैट एंड में दे सेड कि ओके तो बट आप जीटीआरपी करते हो आई सेड नो ओ ब्रांड को Oh, जीटीआरपी प्लेयर ही no. चाहिए सर विल गेट बैक टू यू आई वाज लाइक ओके अच्छा. सर यहाँ यहाँ छुपी हुई थैंक यू बात सो बताई है मच जीजू F. भाई ने अभी। F in the मैंने chat. कहा कौन सा ब्रांड कहेगा कि मुझे मुझे कस्टमर्स नहीं चाहिए सर आप अंडरस्टैंड तो करो गेमिंग को क्या कह रहे हो आप ब्रांड क्यों बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए ये ऑडियंस अरे ये उनके Yeah. कस्टमर्स है उनको चाहिए आप सही से तो रखो मार्केट तो करो सर यू आर अ मिडल मैन आप पे डिपेंड करता है कम्युनिटी आगे कैसे जाएगी अगर आप ही रॉन्ग ट्रैक पे जाओगे तो कैसे स्ट्रीमर ग्रो करेंगे और कैसे नए बंदे स्ट्रीमिंग में आएंगे Correct. I think absolute valid point. Like you said, Chiki Bhai, I think the common consensus is, and we all agree, the fact that here it's not about the quantity, but it is the quality audience that you guys have built up over time, right? It's a very I'd say strong, well-knit community, which a lot of other creators don't have, and it is a very strong following, and that quality of the audience is something that seldom often gets rather overlooked, and people just end up going into just pure numbers and mathematics there. uh, Moving on, Zaya, you've been Yeah. streaming for a long time, and you also had a chat in one of our episodes of 1v1, which viewers, by the way, you can watch it on our YouTube channel. You discussed that being a female streamer comes with its challenges. And it's been a while since you had that chat. I think about a year and a half now. Have you Yeah, I think. seen a shift in that perception as compared to when you had that chat? Has the audience become more accepting today? Yeah, definitely. I mean, nowadays I see far less like trolls, you know, trolling me for being a female streamer and whatnot. I feel like that's because, again, a lot of females have also gotten into this space, you know, a lot of females are also getting into streaming. And so the audience is also more accepting now. They don't, you know, think of us as like some rare species or something, you know. So yeah, definitely abhi to improve hua hai. Now they just troll me for the games, not for my gender, which is much better. So yeah, it has changed definitely. And I feel like those people who used to troll before, they've also grown up. They also know what they were doing was wrong. So yeah. Yeah, you should put back your montage of your Deagle one taps from your CSGO streams for Yeah. them to kind of silence anyone who has Yeah. any doubts. Yeah. Absolutely. Yeah. All right. So, when PC streamers start their journey, uh, I think all of you have said this already, that the growth is usually slow, and what happens is, for a lot of uh, people who want to get into streaming and start this journey, uh, this ends up being pretty discouraging, and they end up quitting along the way. Uh, have you guys ever had that thought of ki, I should give up streaming, or were you demotivated at any point in time through the course of the journey? And if yes, what was it that kept you going? I want to start this with Hydraflick, because I recently saw that you shared a video online where you said that you would be taking a break from live streaming. Yeah. However, you came back to live streaming. I absolutely enjoyed that content that we and I'm sure a lot of the audiences did as well. So what changed your mind? So I've been streaming since last 5 years, 5, 6 years already. Yeah. I wanted to change a few things because it's been 5 years and the channel has only gotten to 3,30,000 subscribers, which again is the PC gaming audience, and I doubt इसके ऊपर और PC gaming audience है that we can reach out to.
So now there are different like live streaming का audience, not PC gaming audience. PC gaming का audience बहुत बड़ा है. Yeah. Live streaming का audience is different. PC gaming audience is different. अभी I think हमारे जो एक और guest थे, Smarty Pie. He's a PC gaming content creator, not a live streamer. So उसका audience काफी different है, and that's the audience that I want to target now. I want to reach out to them and get them into live streaming so the space grows. So yeah, that was the idea behind not streaming for a while and exploring more content, and I did, and people liked it. Like it was brilliant. Got more engagement. I got to read all the comments finally, क्योंकि चैट में कभी कभी मतलब चैट में सारी कमेंट्स मिस हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन में पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव लाइक मेंटली बहुत पॉजिटिव फील हुआ. And yeah, एक महीने के ब्रेक के बाद I'm back. I'm now live streaming and also making video content side by side. So yeah, hoping this works out and I reach out to the audience that I am targeting. Okay. I feel like Xyaa? I feel like a lot of people who quit, they start streaming with the goal that भाई हमको भी numbers आएंगे, फिर brands आएगी, then we'll get to earn and all. That should not be. I mean, ठीक है, बाद में जाके it can be a goal, but like that should not be the reason for you starting out, because obviously journey is a very long journey. You need to give a lot of time to it. You have to grind. Yes, एक महीने में you won't reach the top. तो वैसा mindset, like do it because you actually do love gaming. Don't do it just for brands or fame. हाँ ना. काफी So लोग चालू करते हैं ये सोच yeah, के उनको पैसा yeah, मिलेगा, yeah, उनको ये फेम मिलेगा, yeah, but they're not because actually गेमिंग they see करियर the बनाना top चाहते वो लोग. streamers. Yeah, they see the top streamers now. They're like you. They have a good, उनके vlogs वगैरह देखते होंगे. They like their, life and how they can attend events and this and that. They're earning so much. They're traveling so much, and they're like कि हाँ gaming में तो बहुत पैसा है, हम भी चाहेंगे. And then they start, and then 2 महीने हो गए, and they're like कुछ तो हो नहीं रहा है, क्या फायदा? And then they quit it, and फिर कुछ दूसरा career option ढूंढते. इसको like gaming streaming को like don't start it as a career option. Start it because you love gaming. You want to do it as a side thing, as a hobby, जो कि I feel like हम लोग सब ने वैसे ही start किया होगा. And see where it takes you. This still अभी ये career इसको बना नहीं सकते इंडिया में. It's very मेरा difficult. अप्रोच डिफरेंट था, पर मेरा हाँ, अप्रोच बहुत डिफरेंट था. कैसा मेरा था अप्रोच था 6 महीने approach? देने का इसको. Oh, I okay. didn't start with the approach of just doing it casually. मैं 2017 से प्लान कर रहा था. मैंने 2017 में अपना सेटअप बनाया था, and I was like, okay, let's study, let's see how this works. And Okay. 2018 में I started with not with a plan, but a plan of as a not a big plan, but 6 महीने का मैंने टाइम लिया था अपनी फैमिली से कि 6 महीने के लिए don't ask me, don't tell me anything, just let me do what I think I can, I can get this, I can get somewhere with gaming and make it my career. So yeah, my approach was kind of different, but लोगों को जो influence हुए हैं इस चीज से, मैं कहना चाहूँगा करो, but do find a backup option, because जब मेरा स्ट्रीमिंग करियर लाइक नहीं पिकअप हो रहा था, आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. सो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी इन दैट स्पॉट. Thankfully things worked out, Exactly. luckily things worked out for me. A lot of Luckily things कहाँ? It was your play their मेहनत. roles. हाँ, मेहनत था, बट अरे मेहनत नहीं यार, यूट्यूब पे तो एक एल्गोरिदम भी तो पैच हाँ, करना वो होता भी है है. ना. True, true. So many content आज तक नहीं creators with समझी great मैं. content but no views. हाँ, वो like, समझ, वही तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. I want to learn Yep. that. I want to learn how the algorithm works and move forward with my channel, because stagnant live stream पे तो अभी वो same recognition है ही नहीं जो past 2019-20 में थी यार. तुम लोग को पता है 2019 में recommended आती थी live streams. Now Yeah. they don't recommend live Now streams. they Now they don't. recommend Yeah. shorts. They're focusing on shorts. They're focusing on videos. YouTube was never a video live stream platform to begin with. Yeah. YouTube True, was a true. video platform. इसलिए तो नेवर अ शॉर्ट Then प्लेटफॉर्म ऑल्सो. yeah, बट yeah, वही है, उन्होंने देखा shorts कि platform इंस्टाग्राम भी पे चल YouTube रहा है, ने हर बना जगह दिया. चल रहा है. सब So yeah, ट्रेंड्स just के धक्के. understand how things work before you get into it, and have a backup plan always. या तो पापा का business हो तो best. आजकल आजकल तो it's like if no, so आजकल if you do want to start as a creator, I would honestly recommend starting as like ऐसे videos बना के start करो, especially on YouTube, like shorts and videos.
फिर बाद में लाइक वीडियोस से तुम्हारी ऑडियंस आ जाएगी, देन दैट ऑडियंस विल कम एंड वॉच योर लाइव स्ट्रीम्स, तो फिर तुम्हारा लाइव स्ट्रीम भी चलेगा। बिकॉज अभी तुम लाइव स्ट्रीम करोगे, तुम्हारा लाइव स्ट्रीम रेकमेंड नहीं होगा, तो ऑडियंस ही नहीं आएगी, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो लाइक यू कैन स्टार्ट विद वीडियोस एंड फिर उसके बाद यू कैन डू लाइव स्ट्रीम्स इफ यू वांट। सो या The Gamerstoys, and you've had phenomenal growth in your channel of late, but I do know for a fact, for a while it was a struggle. Did you ever get demotivated, or was that something that you were very clear on, the fact that there will uh, due process with hard work is you will see success? यार एक बिलीव हमेशा था किरण भाई कि अगेन एज आई सेड ना कि लाइक अगर मैं एंजॉय करूंगा तो इवेंचुअली लोग अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। मैं उस पर काफ़ी फर्म था स्टार्ट से, और मुझे पता था लाइक आई न्यू इट कि मैं किस में घुस रहा हूँ। लाइक मैं जो लाइक गेम्स खेलता था, और इवन लाइक 6 months इनटू द स्ट्रीमिंग आई बॉट माई लॉजिटेक G29। लाइक आई वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने स्टीयरिंग व्हील पे स्ट्रीम किया था। उस टाइम पे पीसी बिल्ड प्रॉपर करना ही जो है वो काइंड ऑफ था, तो मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया क्योंकि लाइक मैंने जॉब किया था, मेरे पास सेविंग थी मेरी, आई कुड अफोर्ड दैट, मैंने वो किया। बट आई ऑलवेज न्यू कि ये इजी जर्नी नहीं होने वाली है। तो वॉचिंग वाज नेवर बीन अ कंसर्न फॉर मी कि लाइक 10 वॉचिंग आ रही है। इवन आज भी अगर मैं कोई नया गेम खेलूं तो वॉचिंग काफी ड्रास्टिकली कम होती है, और ये हम सब ने जो चारों लाइक तीनों बंदे मेरे साथ हैं यहाँ पे हर कोई फेस करता है। लाइक Sikhwarrior, Xyaa, हाइड्रा में सबकी स्ट्रीम देखता हूँ, कुछ भी नया ट्राई करो वॉचिंग इम्पैक्ट होती ही होती है। तो वो तो था दिमाग में, वो मैच्योरिटी लेवल थी कि यार ये होगा, और उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होना है। बट एक इंसिडेंट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा एक था कि अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा लाइक जाने में मुझे मजा आता था। इवन मेरे रियल लाइफ में भी मैं थोड़ा सा लाइक अलग चीजें ट्राई करता हूँ। तो आई रिमेम्बर कि इंडिया में ओवरवॉच वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अपना ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम ने जो है वो क्वालिफाई किया था, Yeah. और हमारी टीम गई थी। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि नहीं यार, आज हमारी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, मतलब ग्लोबली जा रही है, और इंडिया में पता ही नहीं ओवरवॉच क्या है। तो वो मेरे में था कि नहीं, मुझे ओवरवॉच खेलना है। मैंने लिटरली 1.5 महीने ओवरवॉच ग्राइंड किया। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल। ओवरवॉच की कम्युनिटी हमने, भले छोटी क्यों ना हो, बट ओवरवॉच की कम्युनिटी हमने बना दी। और वो जोश जोश में इंडियन टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में मैंने जो ओवरवॉच के वर्ल्ड कप की ट्विच की लाइव स्ट्रीम थी वो मेरे स्ट्रीम पे चला दी, एंड देन आई गॉट अ स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक, और उस टाइम पे वो फर्स्ट चांस Uh, सेकंड चांस नहीं था, वो डायरेक्टली आप लाइक खत्म। और वही टाइम था कि मेरा चैनल थोड़ा सा बूस्ट होना शुरू हुआ था। ये 2020 की बात है, एंड 2020 नवंबर आई स्टिल right. रिमेम्बर कि वहां पे मुझे स्ट्राइक मिला, एंड देन मैंने वो वीडियो डाला, एक अपील किया था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा कहूंगा कि काफी लाइक हर जगह पे ग्रुपिज्म होता ही है थोड़ा बहुत। तो आई रियली आस्क फॉर द हेल्प, क्योंकि आई कुडंट रीच टू जो ब्लिजर्ड है उन मैं नहीं पहुंच पा रहा था उन तक, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू पुट माय साइड। आई नो कि लीगली और ऑफिशियली मैं रॉन्ग ही था। तो उस टाइम पे काफी कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया, इवन लाइक थग ने भी जो है मेरे ट्वीट को रिट्वीट किया था। बट वो 3 महीने मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग थे। आई वाज लाइक कि सब कुछ खत्म हो गया, और ऑलरेडी आई वाज 4 years इनटू इट, लाइक 3.5 years इनटू द स्ट्रीमिंग। और मैंने जो सारी मेहनत की थी, और मुझे लगा था कि अब 3 महीने बंद होने के बाद यूट्यूब तो मेरे चैनल को कंप्लीटली डेड कर देगा और सब लोग मुझे भूल जाएंगे। बट जब मेरी वो कमबैक स्ट्रीम थी, वो आज तक की लाइक स्टिल मेरी वन ऑफ द ओपी स्ट्रीम रही है। जिस तरीके का रिसेप्शन मुझे मिला मेरे कमबैक स्ट्रीम में, लाइक आई वाज लाइक कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अगेन मैं यहाँ पे वही चीज बताना चाहूंगा कि आप कैसी ऑडियंस बिल्ड करते हो ना आपके ग्राइंड से, वो आपके चैनल का फ्यूचर जो डिसाइड करती है। अदरवाइज 3 महीने कोई कंटेंट नहीं, चैनल बंद है, और अगर आप कमबैक करके फिर से रेगुलर स्ट्रीम करोगे, मुझे लगता है कि वो काफी मुश्किल होता है। तो वो टाइम मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था। वो 3 महीने लाइक काफ़ी रोया था यार, मैं लिटरली रोया था जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था। तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लाइक मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था उसमें से बाहर आना, कमबैक करना। बट अगेन थैंक्स टू माय ऑडियंस एंड इवन आवर कम्युनिटी, काफ़ी सपोर्ट किया कम्युनिटी ने उस टाइम पे। Sikhwarrior, any anecdotes that you have to share in this regard? एक्चुअली मतलब क्या बताएं, पीसी गेमिंग जो है अपनी चल रही है। लाइक इट्स बीन अ हेल ऑफ जर्नी। सारे पॉइंट्स उन लोग ने कवर कर दिए, लाइक इसमें मैं क्या ऐड करूं? इट्स ऑल द सेम, लाइक आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस टॉपिक। सो गए थे और पीसी गेमिंग चल रही है। अरे यार, लाइक सारे पॉइंट All कवर right. किए। So, जाया ने कुछ बोला, हाइड्रा ने कुछ बोला, चीकी भाई ने अपना ओपिनियन दिया। इट्स लाइक
all the same. Like अब मैं इसमें क्या It's ही like ऐड करूँ? हम सबके यहाँ पे हम जो चाह रहे हैं, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को लेके सब सेम है, एंड हम जो बोल रहे हैं लाइक सबके साथ वो रेजोनेट कर रहा है. सो आई गेस तो या किरण दैट्स भाई इट. एक ही चीज है पीसी गेमिंग में, दुख दर्द और पीड़ा। ये रोज हम लोग जो Same here. सफर करते हैं। I mean, to be very honest, ये जो दुख दर्द और पीड़ा है ना, जो डिमोटिवेशन है, mostly it comes from the comment section. When you read it, like आपको अपने आप से इतना बुरा नहीं लगेगा कि मेरे थोड़े से व्यूज आज कम आए या मेरे आज थोड़े कम व्यूअर्स ने मुझे देखा। बट जब आप कमेंट सेक्शन में देखते हो और कोई पॉइंट आउट करता है उस फैक्ट को बार 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 बार, अरे ये क्या हो रहा है, अरे आपको ऐसे कम क्यों आ रहे हैं, अरे भाई अपना काम करो यार, आप हाँ, कंटेंट बहुत पे बुरा ऊपर लगता है कमेंट यार। कर दो, इट्स फाइन। या आप क्योंकि हमें भी गेम पता है पसंद नहीं वॉचिंग्स आया, कम आ रही है। हाँ, एंड देन व्हेन समबडी कम्स तो इन एंड सेज इट कि अरे क्यों आ रही है इतनी वॉचिंग, अरे क्या हो गया, देन यू आर लाइक शिट, Good मतलब ये that सिर्फ मैं ही you नहीं हूँ brought जो that इतना up. सोच रही हूँ. या या Good that you brought that up, Sikhwarrior. So we'll, अरे I, हाँ ना. I'll throw this to you. Streaming, like you mentioned, can leave yourself open to a lot of hurtful comments and scenarios, right? And Mhm. this over time can take a toll on your mental health as well. So could you elaborate on some of these issues that you just mentioned, and how do you go about dealing with it? इन द स्टार्ट, लाइक मैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। कोई भी एक टॉपिक अगर कोई छेड़ देता था तो उस पे फिर हम लोग डिस्कशन करने लग जाते थे, बातें करने लग जाते थे, उसको समझाने लग जाते थे। फिर ऐसा होने लग जाता है ना, वो सेंसिव जो आपकी वो होती है सेंसिटिविटी, वो खत्म हो जाती है कि वो छोटी छोटी चीजों पे जो आप ट्रिगर होने लग जाते थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 years, वी हैव सीन सो मेनी कमेंट्स, ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, ऐसे ऐसे चैट में चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, लोग चीजें लिटरली आप अपने घर में नहीं बोलोगे किसी से, बट बिहाइंड अ मोबाइल, बिहाइंड अ कीबोर्ड, यू कैन टाइप अनोनिमसली कि जो भी है क्या ही फर्क पड़ता है भाई, ये कोई इंसान थोड़ी ना है। एंड ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम है, आपको दिख रहा है, एंड द पर्सन इज रीडिंग इट, वो रिएक्ट करेगा। उनको बस रिएक्शन चाहिए, उनको बस अपना फन चाहिए, तो दे वांट टू ट्रिगर यू। बट हाँ, ओवर द लेस जब वो नंबर्स भी होते हैं ना ज्यादा, लाइक आपके, लाइक नई ऑडियंस आई होती है, दे डोंट नो यू, और लाइक नंबर ज्यादा होते हैं, तो वो कम्युनिटी फिल्टर्ड नहीं होती। अभी क्या धीरे धीरे वो कम्युनिटी फिल्टर हो जाती है, फिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो कम हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव वाले ज्यादा रहते हैं, बिकॉज दे स्टिक अराउंड। तो फिर उसके बाद Yeah. धीरे धीरे यू गेट यूज टू इट, आपको वो चीजें कम देखने को मिलती हैं। एंड अब तो बहुत ज्यादा मॉडरेशन फीचर्स भी आ गए हैं ऑन द लाइव स्ट्रीम। यू कैन बैन वर्ड्स, यू कैन डू सब्सक्राइबर ओनली मोड, यू कैन डू मेंबर ओनली मोड, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर फेसिंग। तो इट्स बेटर, वे बेटर। अभी अभी आजकल अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई स्ट्रीम कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बेटर है। बट अभी भी एलिमेंट्स वैसे हैं जो कि आपको ट्रिगर करेंगे, सो यू हैव टू जस्ट, लोग बोलते हैं ना, आप उसको एंटरटेन क्यों कर रहे हो, आप पढ़ो ही मत, रिप्लाई मत दो। जब वो सेम चीजें बार 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 आपके कॉपी पेस्ट करता रहेगा, या अलग अलग आईडी से बना बना के आपको ट्रिगर करता रहेगा, आप होगे ट्रिगर। ऐसा है ही नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है क्या, I लाइक mean, वी we are आर humans. ह्यूमन। Yeah. एग्जैक्टली। तो वो कहना आसान होता है, ऑनलाइन जो आपको देखते हैं कोई रिएक्ट करते हुए, वो सीधा लिखेंगे व्हाई आर यू एंटरटेनिंग, इसको छोड़ो ना, आप इग्नोर करो ना। बट दे कांट, दे जब तक वो सेम शूज ट्रू। पे आएंगे नहीं, हमारी जगह पे बैठेंगे नहीं, दे कांट अंडरस्टैंड कि क्या फील होता है। कोई आपके प्रोफेशन पे ऐसे उंगली उठाए, या आपके काम पे ऐसे कुछ बोले, या मे बी आपके घर वालों के कुछ बारे में कुछ बोले, या मे बी दे टॉक शिट अबाउट एनीथिंग, तो क्या बोलूं, इट्स डिप्रेसिंग। बट देयर आर पीपल, देयर आर एलिमेंट्स, देयर आर फैक्ट्स। और इसमें सबसे बड़ा एक और फैक्टर है जिस जो कि हेल्प करता है, लोग, लाइक मुझे एटलीस्ट हेल्प करता है, दैट व्हेन यू स्टॉप द स्ट्रीम, यू गो विद एंड हैंग आउट विद पीपल जो कि इन सबसे दूर हैं। दे डोंट टॉक अबाउट स्ट्रीमिंग, दे डोंट टॉक अबाउट योर लाइव स्ट्रीम, दे डोंट टॉक अबाउट योर व्यूज और एनीथिंग, क्या खेला क्या किया, नहीं, मुझे अब उस बारे में बात ही नहीं करनी। इट्स लाइक ऑफ, अभी शट डाउन हो चुका है, मैंने पीसी बंद कर दिया है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। इट हेल्प्स मैजिकली, इट हेल्प्स। एंड देन यू गो अराउंड नेक्स्ट डे, फिर आप यू गो फ्रेश, लाइक ओके, अब देखते हैं क्या Straight करना back है। into it. यस। Any anything anyone wants to add to what just यार मेरे Sikhwarrior को ना said? एक चीज चेंज करनी है यार.
मेरे को ना एक चीज चेंज करनी है। क्या? मेरे को थोड़ा माइंडसेट है ना अपने स्ट्रीमर्स का भी चेंज करने का मन है। तो आज चलो थोड़े 3 स्ट्रीमर्स बैठे साथ में, तो बताओ बताओ। मेरा ना अभी मन करता है कि हम बहुत सॉरी फील करते हैं यार, एक कैटेगरी को लेके जिसमें हम अभी इन्वॉल्व है पिछले कुछ सालों से। I think we should stop feeling sorry about the things that are bad and start focusing on how to grow better rather than just sticking to things which are not good. Like नहीं हो रहा growth तो उसमें क्यों carry on करना? Like 1 साल 2 साल दे दिया 3 साल दे दिया, you trying के हाँ maybe tomorrow some new game will come and it will boost up, like it will bring hype in yourself too and also audience maybe. I think we should stop that यार, मतलब we should stop complaining कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, and just get up and start making content that reaches the mass नहीं, ये तो लाइव स्ट्रीम पे कौन rather बोलता है than गलत है? ये तो अभी तो पॉडकास्ट में लाइक क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए हम लोग अरे नहीं नहीं ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे हैं, बट आई डोंट मैं थिंक यही कि बोल रहा हूँ, लाइक मैं यही हाँ, बोल रहा हूँ, but most of the podcast, अभी चिकी भाई you are a little positive, but most of the podcast has been around this vibe of feeling sorry about the thing that is happening, right? कि हम्म। व्यूज कम है, नीश है, इसमें ग्रोथ कम है, ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं ज्यादा बिकॉज वॉचिंग कम है. I think we need a little more positive attitude towards what we do, and also rather than doing something that is not working since last few years, try something different. That's like what I am doing, right? अभी मैंने को चेंज किया and बहुत I know it's not easy. मेरे भी brands है, they've been like हम लोग 3-4 साल से partnered है, and they're like why are you not streaming? We are signed with you because you're streaming. Just tell them look at the bigger picture. बड़ा पिक्चर देखो, मेरे को मिलियंस तक जाना है, मेरे को ये केस में नहीं रहना है. सिंपल सी बात है, स्ट्रीमिंग करता रहा तो केस में ही रह जाऊंगा, राइट? सो वी हैव टू ब्रिंग दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड नाउ या दैट rather वाज द than पॉइंट, लाइक हाइड्रा, ये आपने सही कहा. लाइक किरण भाई, मैं जो उस लाइक yeah ब्रांड और उसके बारे में बात कर रहा था ना, तो सिर्फ स्ट्रीमर अपना विजन चेंज करने से नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है वो हम सबसे चलती है. लाइक हर एक जो वर्टिकल है yeah वो अपना रोल प्ले करता है. अगर स्ट्रीमर अपना रोल प्ले करेंगे बट अदर एंटिटीज अपना रोल नहीं प्ले करेंगी ना, जैसे लाइक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एजेंसीज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो ओवरऑल चीजें कनेक्ट नहीं होगी. सिर्फ आप पॉजिटिव रहोगे, like आप एक्सपेरिमेंट करोगे, बट आपके आसपास वाले अगर चेंज होने के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो क्या फायदा आपका चेंज होने का. सो ये yeah पॉजिटिव माइंडसेट हर हर जगह से आना चाहिए, पूरी कम्युनिटी से वो एक पॉजिटिव माइंडसेट आना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. लाइक ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर पॉजिटिव. लाइक हमने आज तक 6 साल तक हम लोग क्यों स्ट्रीम करते रहे, और इवन तो ऐसा नहीं कि कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. एवरीबडी इज लाइक ठीक है, अप्स एंड डाउन्स we होते are रहते हैं, दैट्स अ we are पार्ट definitely पार्सल ऑफ लाइफ. we are definitely positive, we are definitely positive, but most of the time, like I want this, I want to say, I was saying this because I want to motivate like the या ट्रू streamers ट्रू. who are there watching, Yeah. or नो, योर even पॉइंट इज streamers on the एब्सोल्युटली panel. वैलिड, हाइड्रा. ट्रू. कि it's not right, like अगर नहीं कुछ, if something is not working out, don't take the stairs again and again वही slow growth के लिए. Just थोड़ा होल्ड करो, एक जंप पैड डालो, और you know just go on top. You have to give it time. Like, दिन का 6 घंटा तुम स्ट्रीमिंग डाल देते हो, मे बी टेक अ वीक ऑफ. थिंक वो 6 घंटे में तुम सोचो और कुछ ऐसा बनाओ जो लाखों लोग ज्यादा मिलियंस तक पहुंचे, you know, rather than spending हम्म. 6 Yeah, I hours every feel day like you on it. also have to like evolve जैसे जैसे Yeah, पूरा yeah. या इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है. लाइक आजकल जैसे शॉर्ट्स वगैरह ज्यादा चल रही है लोगों की. लाइक इवन मी, आई कैन नॉट लाइक सिट एंड वॉच ऐसे एक्सट्रीम पूरा एकदम 5-6 घंटे तक. आई वॉच सम टाइम, आई गो बैक, आई कैन कम बैक लेटर, आई वॉच अगेन. इट्स जस्ट लाइक आजकल ये शॉर्ट्स रील्स वगैरह का फुल ट्रेंड बन गया है. सो लोगों के ऐसे अटेंशन स्पैन भी ऐसे कम हो गई है. सो यू हैव टू अडेप्ट लाइक दैट, लाइक मेक मोर वीडियोस, शॉर्ट्स वगैरह डालो. यू हैव टू सी लाइक वैसे ही कि मतलब स्ट्रीमिंग सिर्फ करके अभी ग्रोथ करना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. यू हैव टू लाइक दूसरे दूसरी चीजें भी करनी पड़ेंगी, विच आई फील लाइक ऑल ऑफ अस आर डूइंग टू बी या ऑनेस्ट. सी सब बेसिकली वीडियोस आपको बना रहे रीइन्वेंट हैं. करना है अपने आप को, हम्म. लाइक क्योंकि Yep, एक yep, फॉर्म ऑफ yep. एंटरटेनमेंट से आप हमेशा के लिए सेटल नहीं हो सकते, या क्योंकि सिंपल है यार, अगर घर में रोज एक ही सिर्फ दाल चावल ही दाल बनेंगे तो चावल इवेंचुअली बन आप रहा लोग बोर हो है. जाएंगे यार. Yep, इवन yep, रोज या yep. आपका फेवरेट पाव भाजी, आपका फेवरेट पाव भाजी है, रोज खिलाओगे हाँ, तो आप बोलोगे नहीं वो भी यार, बोर हो जाएंगे वो भी लोग. नहीं चाहिए या मुझे. तो
अगेन एज आई सेड कि रीइन्वेंट करना है आपको और आपको देखना है कि क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस क्या चाह रही है। मे बी आप जब रीइन्वेंट करते हो तो कुछ चीजें फेल हो जाएगी, दैट्स फाइन, क्योंकि लोग फेलियर से फिर डर जाते हैं। अगर 2 Yeah. महीने 1 महीने के लिए वॉचिंग डाउन होती है, दैट्स फाइन, लाइक उसके लिए टेंशन लेने की That's, जरूरत नहीं है, I लोग feel, a आएंगे very नए good लोग। point. या Yeah, एग्जैक्टली। like that people don't experiment because of that. They're like कि यार अब मैं मेरा चैनल अच्छा खासा चल मैं रहा है, अब मैं वही कुछ कर दूसरा रहा गेम था। खेलूंगा तो हम्म। लाइक वही हो जाएगा, वो डर रहता है। मैं आई बता नो या हाइड्रा मैं पता है तुम पिछले 1 इसी साल डर से से रह रहे पिछले थे 1 यार। साल से आई वाज़ थिंकिंग कि यार मैं स्ट्रीमिंग अगर मैंने हफ्ता टाइम ले लिया कंटेंट प्लान करने के लिए या तो फिर मैं कुछ डिफरेंट अगर शिफ्ट करता हूँ तो मेरा जो ऑलरेडी आता है वो चला जाएगा। या मेरी उसी जो से ब्रांड लोग डील्स है वो चली डरते हैं। जाएगी क्योंकि जो ऑलरेडी आ रहा है मैं रिस्क लूँ या ना लूँ। बट अभी जो एटीट्यूड आ गया है वो है फक इट एंड जस्ट अपना जंप पैड रखना है भाई नीचे और कूदना है भाई तो टॉप पे जाने के लिए। अब नहीं करना I, है I, एवरीडे वो 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार नहीं भाई सीधा एक 10-15 हज़ार तुम बनाते रहो 3 लाख व्यूज आएंगे तुम्हारे महीने के या तो तुम पूरा महीना लोग ऐसा कंटेंट बनाओ जो मिलियंस ले आए सिंपल। क्वालिटी I ओवर think क्वांटिटी। yeah, I think the challenge here comes in two aspects, right? One is if you've established a community, the community kind of now wants a certain kind of content from you, and and there is a challenge in kind of getting them to accept the different content now that you're exposing them to. And like Hydraflick mentioned, for a lot of newer streamers, I think that challenge is much easier to face because they're just starting, they have much smaller audiences, so it's easy there to kind of experiment and figure out या what is it that works for you, and then kind of pivot from there and have your audiences built in a way where they are more accepting of you trying new things than having them go towards one single game. And we've been in a good space, but of course the mobile community was in uh, uh, a problematic situation when they knew one game, they put all their eggs in one basket and it kind of blew up, and then it was a much bigger problem there to kind of pivot and do something else. So I think we're in agreement there. I've taken a lot of all of your time, so I'm gonna quickly fasten through 1-2 questions. We'll take audience a couple of questions and then go ahead. One question I know for a fact that all the audiences here have, I want to get your perspective as well. This is the one thing I'm sure a lot of people came in mind thinking about. Um, in a country which is dominated by mobile game streaming, is it lucrative to be a PC game streamer? Uh, let's start with Sikhwarrior. इफ यू कैन ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल देन यस। अगर आपको भी सेम चीज करनी है जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं देन इट विल बी ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल ऑलरेडी डूइंग इट। आप जब तक कुछ नया लेके नहीं आ रहे हो, मे बी अ न्यू फॉर्म ऑफ कंटेंट, मे बी अ न्यू स्टाइल ऑफ कंटेंट, मे बी समथिंग न्यू, कुछ भी एनी न्यू एस्पेक्ट विच पीपल लाइक अबाउट यू, तो इट कैन वर्क। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर है वो चीज़, तो डू इट। लाइक डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि हाँ सेकंड डाउट्स होने ही नहीं चाहिए, सीधा कर देना चाहिए। आई फील व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल सेकंड डाउट था ही नहीं, करना है चालू कर दिया, आज चैनल नाम डाला ये वो फलाना, आई स्टार्टेड। उसके बाद आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। इट वाज़ अ जर्नी, इट्स स्टिल अ जर्नी, एंड हम भी अपने कंटेंट को चेंज कर रहे हैं ओवर द टाइम कि क्या-क्या लोगों को पसंद आ रहा है, थिंकिंग अबाउट इट, ट्राइंग टू डू इट। कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे भी आए और ऑडियंस को भी आए। ऐसा नहीं चाहता कि मुझे अगर लाइव स्ट्रीम करने में मज़ा आता है और ऑडियंस को लाइक कुछ और देखना है तो मैं अपने आप को पूरा कंप्लीटली चेंज कर लूँ। ऐसा नहीं, बट figuring out a way कि जिसमें बैलेंस बन जाए and do it. So yeah, new person has to be very creative or bring something new. Okay. Cheeky Bhai, is it lucrative? लाइक देखो, आप ये सोच के आना ही नहीं है कि ये लिक्विडिटी है या नहीं है। पहली बात तो अगर आप एंजॉय करते हो पीसी गेमिंग, इफ यू आर एंटरटेनर, आपको लगता है कि यू आर वेरी सोशल, आपको नए लोग नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, दिस इज योर फील्ड, जस्ट गेट इनटू इट, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। जैसे हमने पहले भी कहा, कीप इट एज अ हॉबी। एंड मैं आपको बता रहा हूँ किरण भाई, जो फॉर्मूला मैंने यूज किया ना, लाइक द कॉमन कंप्लेंट आई ऑलवेज गेट ऑन लाइव चैट की
18-19 साल के बच्चे बोलते हैं कि यार चिकी भाई हमें गेमिंग करना है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास ही है भाई। डोंट टेल मी कि जो जिसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया, जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी, उसकी बेटी हुई थी, उसका फुल टाइम जॉब था, स्टिल आई मैनेज टू स्ट्रीम 4 आवर्स एवरी डे। उसको तो कहो ही मत कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सिंपल है, मैं एक फॉर्मूला दूँगा, लाइक हर 18-19 साल का बच्चा जो है ना 8 साढ़े 8 घंटे सोता है। कुछ ज़रूरत नहीं है साढ़े 8 घंटे सोने की। जो मैंने किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, आई जस्ट कट डाउन माय स्लीप। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर ओनली 4 आवर्स। उतना मत करो, स्लीप फॉर 5 एंड हाफ आवर्स। जो 3 घंटे आपके बच रहे हैं, वो 3 घंटे एंड ऐड 1 मोर आवर फ्रॉम योर डेली शेड्यूल। 4 घंटे इज़ मोर देन इनफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर करियर। आपको सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, जॉब, स्कूल, कॉलेज जो आपका चल रहा है वो चलने दो। उससे एक फ़ायदा होगा कि आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो देखेंगे कि ठीक है भाई, वो अपनी स्लीप कट डाउन करके सुबह जल्दी उठ के वो टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है और एक्स्ट्रा उसने जो 3-4 घंटे निकाले उसमें वो गेमिंग कर रहा है। उससे आप पे ना फैमिली प्रेशर आएगा, नो सोसाइटी प्रेशर आएगा। इसके शर्मा जी के लड़के ने ये किया, तू तो गेमिंग कर रहा है, कोई आपको ये बोलेगा नहीं। 4 घंटे मोर देन इनफ, वेदर दैट्स ए स्पोर्ट्स आपको पसंद है, उसमें आपको करियर करना है या फिर आपको एज़ ए एंटरटेनमेंट करना है। आप 4 घंटे करो, साइड बाय साइड आपके करियर को चालू रखो। उसका एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि जब आपका एक प्राइमरी करियर चलते रहेगा ना, वो कभी भी प्रेशर आपके स्ट्रीमिंग पे आएगा नहीं। और एक एंटरटेनर जो होता है ना, वो अंडर प्रेशर कभी भी एंटरटेन नहीं कर सकता। वो आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका स्ट्रगल आपके चेहरे पे दिखेगा। इवेंचुअली आपके क्वालिटी में वो दिखेगा और आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और आप आराम से लाइक गेटिंग इनटू द जॉब, फुल टाइम जॉब करके भी आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स वेरी ईज़ी इफ यू आर Yeah. पैशनेट अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Right. Hydraflick? So by lucrative, you mean does it get you money? Yeah, Yes. That's yeah, it gets you a precisely lot what of I. money. Yeah, that Yeah. it gets you. Gaming can get you a lot of money. There's a lot of money in the scene. A lot of money to grab if you're in the right space, if you're doing the right things, if you have a right image. You can make yeah, in a couple of years you can buy yourself a nice house, a nice car. That's a lot of money. I mean, you've already seen a lot of creators do that. So there's proof. There is proof, and a lot of people think gamers. Chalo, like when people assume how much gamers make, they say, oh, 2 lakhs, 3 lakhs, bahut, like they think, oh, great amount. It's not even 10%. Malab, for the Yeah. top level creators. I mean, for us, of course, we are earning peanuts. Yeah. Compared to those guys, ठीक है but it's भाई, still really ठीक है। good. जले It पे is still नमक मत it is छिड़को still यार. it is still better than owning running a full fledged business. You can make very good amount of money if समझ लो मेरे level पे Zach level पे all the creators in the panel. You can every one of us, I'm sure, are making more money than a small business. Yeah. So yeah, money hai. यार Zaya, honestly anything you तुम want to add to सबने this? yeah everybody has said like what I also like ये लास्ट में चांस आना is हमारे सामने पहले ऑलरेडी सबने सब कुछ बोल दिया है पॉइंट्स जो भी था मैं इस पाजी but का पेन समझ सकता हूँ थ्रू आउट द पॉडकास्ट। yeah We now have I been going know in how one Paji order. was feeling Now we तब go से there. but yeah definitely I mean जैसे ये चीकी भाई ने जैसे बोला कि टाइम नहीं मिलता है हमें स्ट्रीम करने का व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड अ फुल टाइम जॉब 9 to 7 मेरा जॉब था लाइक 9 to 9 पकड़ लो ट्रैवलिंग को मिला के आई यूज टू कम बैक होम आफ्टर माई जॉब फिर आधे घंटे में फ्रेशन अप होके आई यूज टू स्ट्रीम तब मैं ट्विच में स्ट्रीम करती थी फिर रात को ऐसे 10 से 12 1 बज जाते थे बट या उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये होती थी लाइक मेरे को उस टाइम पे एक चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ता था दैट वाज माय सोशल लाइफ बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस से घर आओ डायरेक्ट स्ट्रीम करो बट देन अगेन मेरा सोशल लाइफ स्ट्रीम्स के थ्रू इम्प्रूव हो रहा था आई वाज मीटिंग न्यू पीपल ऑनलाइन तो वैसा सब है ऑब्वियसली इफ यू रियली वांट टू डू इट यू विल फाइंड टाइम फॉर इट सो या पैशन शुड बी देयर दैट्स द मेन थिंग लाइक अब ऐसे लुक्रेटिव सोच के मत आ जाओ ऐसे स्ट्रीम करने को बिकॉज देन यू विल बी लाइक अरे यार कुछ तो मिल नहीं रहा है नहीं, हमें but क्यों करें स्ट्रेट अप हाँ क्वेश्चन वही है ना कि पैसा हाँ है लुक्रेटिव है या मार्केट नहीं में, इट ये इज लुक्रेटिव है कि नहीं है, बट इट अगर वो इज वेरी लुक्रेटिव है या तभी जब आप वो लाइक
2 और 3% वाले में कैप्चर अगर आप आओगे तो ही है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि जितने हाँ हमें सक्सेसफुल दिखते हैं स्ट्रीमर, उससे कई गुना ज्यादा जो एंड अपना करियर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं स्ट्रीमिंग और गेमिंग के वहां चक्कर में। पहुंचना देयर आर है लॉट ऑफ तो पीपल मिलियंस लाइक चाहिए, वो मिलियंस। लिटरली अरे 8 जस्ट 8 गेट लाख अ गुड 9 9 लाख मैनेजर यार, सब्सक्राइबर के जस्ट गेट अ गुड मैनेजर, ट्रू ट्रू वही तो मैं एक डेफिनेटली जस्ट गेट अ मैसेज गुड दिया था हाइड्रा मैनेजर मेक। लाइक तो ऐसा है लाइक बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है पैसा कमाना, बट देन यू हैव टू बी हाँ अमंग टॉप, देन ओनली यू कैन अर्न। अदरवाइज आप पूरी करियर की जो धज्जियां उड़ा सकते हो अपने। सो यू हैव टू गो विद द प्लान बी यार, सिंपल है, हॉबी के साथ चलो, या प्लान बी के साथ चलो। उसको प्लान ए मत करो, करियर मत बनाओ। जब वो लाइक ऑर्गेनिकली ग्रो होते होते जाएगा, और जिस दिन वो आपके मेन करियर को ओवरटेक करेगा, जब आप स्ट्रीमिंग से ज्यादा अर्न करोगे अपने जॉब से, देन स्विच इट टू द लाइक स्ट्रीमिंग एज अ रक्का जोन डिड, करियर। या या लाइक एग्जैक्टली, रक्का इवन जोन आई डिड डिड द सेम इवन आई एंड डिड द टी सेम बॉन डिड, एक्चुअली हाँ टी बॉन मैंने भी रक्का वही जोन किया क्लियर लाइक एग्जांपल्स एग्जैक्टली। सबने वही चिकी किया भाई, हमने आई थिंक सबने, मैं ही हूँ जो 6 महीना लेके चालू कर गया था बिना या जॉब के। हाइड्रा, यू सेड ना, इफ योर डैड इज अ बिजनेसमैन देन यू कैन। या मेरे पापा बिजनेसमैन है, सो यस यस यस। अरे बट यू डोंट नो अरे मेरे ऐसा, डैड बिजनेसमैन नथिंग थे, इज बट इजी। कोविड, हम्म। कोविड हैपेंड, कितने हम्म बिजनेसेस का क्या हाल हुआ है ब्रदर। या आई एम लकी आई वाज अर्निंग थ्रू स्ट्रीमिंग, नहीं तो घर घर पे खाना नहीं आता, इतना प्रॉब्लम हो गया था। आई थिंक कोविड के सो या uh, चलते ही लाइक बहुत सारे will स्ट्रीमर्स भी आए हाँ स्ट्रीमिंग को थोड़ा वो अटेंशन भी और मिला प्लस कोविड के वो चलते नंबर्स भी आए हाँ थे बहुत व्यूअर्स के भी। नंबर पूरा भी था, बूम एंड हुआ सब था देन घर उस पे टाइम बैठे पे तो मजा आ इट्स गया। बैक टू नॉर्मल। या नाउ इट्स I don't feel good to say that COVID was profitable for us in any way, and but yeah, it was. yeah, and did you guys also see like a change in the scenario when it comes to brand collaborations pre and post COVID, in terms of how you approached the brands, and what was kind of expected from you? Did you see like a change between that time, Yeah, since we did bring this up? Yeah, आई COVID मीन के पहले या it was offline, ना? Most of the stuff yeah, happened offline. COVID के time पे everything started happening online, and now things या are more online. Like it has been like that. Majority of the yes, events are now online. Rather, अभी अगर COVID नहीं हुआ तो maybe we would have been doing this podcast in इन Bangalore. स्टूडियो। ऐसा in the yeah. studio, nearest या studio, whatever. But yeah, so I think I've noticed that change. And also marketing, yeah, I wanted to mention that as well. COVID के time पे because there were not enough people going out looking at billboards and stuff, so a lot of brands and companies who wanted to market their products, they reached out to influencers on social media, and gaming influencers को भी reach out किया. So I think COVID के बाद से they've realized how uh, like our reach can help them, and yeah, Yeah. it's been like that since after, आई like मीन after COVID. it's much more profitable for like a brand to have like an टारगेट हो जाता है ना, influencer हाँ वो target audience उनको टारगेट हो मिलती है जाता है। अब instead of like बिलबोर्ड में कौन देख billboard रहा है? exactly कौन देख रहा है, exactly किसको क्या पता है? इंस्टाग्राम एड्स भी चलो, you that's a really good way to market. But if you want to promote a gaming product, if you want to promote a gaming monitor, or let's say anything, भाई, you pick up someone who you know who people ask कि इज कौन सा फ्रॉम मॉनिटर रेडिट। खरीदना चाहिए। हाँ, us तो basically it's very simple, हाँ स्मिथ, yeah. Perfect. Okay, so I don't see a lot of audience questions which haven't already covered the topics we have. I think we've kind of let loose, and I've kept you guys too long here. I'm so sorry for that. Apologies, but I तो think मुझे तो पता नहीं चला। in नो the नो course लाइक yeah पता yeah नहीं चला we've यार। kind of covered everything that a lot of the audiences have asked since the start. So I think that I will take that as a success in पूछना है एक itself. बार ऑडियंस But को, there is one कुछ question I कुछ see here from Vishal. He says, let how do the you audience manage? spam. Yeah, we'll just let them spam. I've found myself a question as well in the meantime. Vishal says, how do you manage work and personal life simultaneously when it comes to PC Oh, game very streaming? difficult. Uh, so you can, feel free for anyone to jump in and take यार मैं that बस in. कहूंगा कि लाइक जैसे आपका कोई प्रोफेशनल जॉब है, वैसा ही ये एक फुल टाइम करियर है, तो यू हैव टू मैनेज लाइक डिफिकल्टीज होती है।
बट देन लाइक कोई ऑप्शन नहीं है लाइक घर पैसा कमा रहा है तो ग्रो करना है तो आपको यू हैव टू मैनेज, देखो तो लाइक कभी देखो होता डिफिकल्टी है, होती है। कभी हाँ ऑब्वियसली होती है, बहुत होती है। मेरी बेटी नहीं नॉक कर पता रही है है डिफिकल्टी कंटिन्यूअसली क्यों डोर होती पे है? हाफ एन आवर से, बट लाइक आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। हाँ, नहीं पता है क्यों डिफिकल्ट होती है? वही यही रीज़न है। नाउ योर डॉटर वोंट नॉक इफ यू आर इन द ऑफिस फार फ्रॉम योर होम। या तुम घर पे बैठे हो तो तुम्हारे पार्टनर या तो हूएवर इज़ लाइक इन योर फैमिली, दे हैव द एक्सपेक्टेशन दैट यू आर अवेलेबल। Now that expectation is not good when you're a streamer because एक्चुअली, you और have to इज्जत नहीं be मिलती in the यार घर room से for काम करते तो, पता है किरण हाँ, भाई, वही इज्जत नहीं मिलती। वही अरे मेरी लाइक वाइफ को पूछते हैं वही तेरा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है क्या, घर में बैठा रहता है। Paji's been waiting to jump in as well. Please go ahead, Paji. नहीं, ऐसा ऐसा ही है, यही सब क्वेश्चन रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं कि हाँ अरे यार जो दीपक भाई ने बोले। और प्लस यही रहता है कि अच्छा आज चलो 1 घंटा देर में स्ट्रीम कर लेना, चलो यहाँ हो आते हैं, चलो हाँ इसके यार घर हो भाई, आते ग्रांटेड हैं, लेते वहां हैं यार चले भाई, कोई जाते हैं। वैल्यू नहीं है यार। वो थोड़ा सा करना पड़ता है, बट ठीक है, दैट इज लाइक अ पर्क एज वेल कि आप अपने उस पे काम कर रहे हो, एग्जैक्टली यू आर नॉट अपनी वर्किंग मर्जी से अंडर समवन कि अरे या 9 बजे आना ऑफिस, भैया 9 बजे नहीं आए तुम्हारी पगार काट लेंगे, ऐसे थोड़ी ना भाई। अब आपको आराम से पूरी फ्रीडम है कि ओके आपको इतने बजे कभी भी आओ, अपना क्रिएट करो कंटेंट, वीडियो ट्रू। रिकॉर्ड करनी है या स्ट्रीम करनी है। हाँ बट ये हो जाता है कि उसके चक्कर में लेट बहुत हो जाता है, मेरा तो एटलीस्ट बहुत हाँ ज्यादा लेट हो चैट जाता है। लेट स्पैम चालू कर देती है फिर और इवन लाइक जब और कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है ना, तब आपको काफी प्राउड फील होता है कि आप इस प्रोफेशन में हो, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर पाते हो। या अदर देन अगर एग्जैक्टली आप ऑफिस में रहते या होते तो वो आप उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। आप 10 दिन बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आंसर नहीं करना। ऑब्वियसली आप स्टोरी डाल दोगे, व्यूअर्स अंडरस्टैंड करते हैं, दे आल्सो सपोर्ट कि कोई टेंशन नहीं है सर, आप टेक योर ओन टाइम, हम लोग आएंगे 10 दिनों के बाद। और लोग एक्चुअली आके सपोर्ट दिखाते हैं, हाउ इज योर फैमिली नाउ, हाउ इज एवरीथिंग। तो तब लगता है कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, बट लाइक वी आर इन रियली गुड प्लेस एंड वी आर डूइंग रियली गुड। सो मेडिकल agreed to इमरजेंसीज that। में इट रियली हेल्प्स यू। पर्सनल अब लाइफ इसमें काफी मतलब हो जाता अब है। इसमें व्लॉग्स भी अच्छा हो जाता है बिकॉज देन यू गेट टू गो ऑन इट लाइक सपोज कहीं ट्रिप पे गए हो फैमिली के साथ तो एज अ कंटेंट क्रिएटर अब व्लॉग बना दो कंटेंट भी बन गया और फैमिली टाइम भी हो गया सो वो सब भी पर्क्स है हमारे इस करियर के आई ट्रू वुड से ट्रू। लाइक सोशल लाइफ Yay, के some लिए ये positives। करियर इज लाइक इट हैज मोर पर्क्स देन कॉन्स आई फील हम्म। हो जाता है मैनेज यार Yeah. अपना फैमिली सक्सेसफुली एंड यार मर्ज कर बट लो आई अगर आप। आई टेल यू हाँ किरण भाई, इवन सारे लाइक स्ट्रीमर्स एग्री करेंगे कि पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होता है लोगों को फेस करना कि आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है। हाँ मेरे पापा को आज भी नहीं पता है कि Yeah. मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर वो आंसर नहीं दे पाते। लाइक आई जस्ट शेयर यू वन लाइक इंसिडेंट। अभी मेरी जब 100 के होने के बाद यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन आया, लाइक मॉम डैड हैप्पी थे, मैंने दिखाया, मैंने कहा यार ये हम लोगों के लिए ऑस्कर अवार्ड है, स्ट्रीमर्स के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। सो लाइक उन्होंने कहा कि यार इट्स रियली गुड, बट तुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी यार। तो वही है कि वो अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि लाइक हाउ बिग दिस थिंग इज। तो उनके लिए मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होता होगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है यार, वो गेम खेलता है, ये बताना थोड़ा सा यू नो वियर्ड होता होगा, बट ठीक मेरे है। पापा तो जिनको नहीं जानना हो तो उनको भी जाके बताते हैं कि मैं करता हूँ। इतना हाँ प्राउड। हाँ एक्चुअली एक्चुअली मेरे भी लाइक पेरेंट्स जो है वो हमेशा ऐसे उनको लाइक ठीक है अब समझ में नहीं आता है वो दे डोंट केयर कि आगे वाले को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐसे न्यूज़ आर्टिकल अगर आया हो या फिर कुछ भी अगर जैसे अभी मैं रियाद गई थी तो उसका फोटो वगैरह भेज देंगे तो वो सबको बताते हैं कि हाँ हम्म। हमारी बेटी ये कर रही है देखो अब वो हम्म। आगे वाला केयर करे ना केयर करे दे डोंट केयर बट गेमिंग से कुछ होता है क्या, वो ऐसे पूछते हैं उसके आगे? हाँ और फिर लाइक वो बताते हैं मेरे मॉम डैड भी कि ये देखो उसने ये किया था वो किया था जैसे एक बार आई थिंक आई एम अहमदाबाद या किधर तो भी एक मैं गई थी पैनल के लिए अब नॉर्मल ओ नॉर्मल माय पढ़ाई से आई एम गॉड। नहीं पहुंच पाए बट गेमिंग के चलते पहुंच गए आई एम और वहां जाके हम ये लाइक ऐसे पैनल में है सो सही है ऐसे या प्रोज एंड कॉन्स से बड़ा है अगेन, बिलीव कि अगर आप पैशनेटली करोगे तो प्रोज ज्यादा है। या डेफिनेटली Yeah. Paji, you wanted एक to बंदा add चैट में something as लिखता है well? एक बंदा चैट नहीं में लिख नहीं रहा है नहीं मैं कंटेंट ऑल राइटर हूँ, मेरे पापा सबको बताते हैं मैं टाइपिस्ट हूँ। बस वही है कि घर वालों को तो मतलब सिंपल वे में किसी को समझाना होता है तो यही बोलते हैं यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है।
अब सामने वाला चाहे जो समझे कि शॉर्ट्स बना रहा है, रील्स हाँ बना रहा है, डांस कर रहा है, कर रहा है, व्हाटएवर। मेरे या पापा फिर यूट्यूबर कौन नहीं सा बोलते, या फिर मेरे पापा कच्चा सीधे बादाम बोलते पे नाच रहा है, सेलिब्रिटी डजंट है। मैटर। हाँ, डजंट मेरे मैटर, पापा ठीक यूट्यूबर है। नहीं बोलते, सेलिब्रिटी है मेरा बच्चा, ऐसा बोलते हैं पूरा टाइम। अरे वाह! और उनके लिए ऑफ कोर्स वो है वो चीज, सो दैट्स गुड। Yeah. Yeah. So I see one question from Abhay. It's a very interesting one. He says, "How is the career path as you grow older, like 40 plus? Uh, like, can one sustain just streaming, or if that person has to transition, then where can one transition to later on?" I think I'm very interested about the second part, because I think we are all in agreement ki we are going to keep streaming forever. um, I think you guys are wonderful creators, you're going to keep doing this, but if you had to transition, how, where would that lead to? Yeah, very interesting. लाइक Sikhwarrior, आई कुछ समझ? फील कि आई फील कि जो भी लोग हैं अभी यहाँ पर, इट्स ऑल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी अभी तो, इस क्वेश्चन का जितना भी है, Exactly. Exactly. nobody is हम भी there. अभी वही तो सोच I've रहे हैं thought कि ठीक है, क्या about it. करें. you can I've only thought about it. imagine, you can only imagine, this is the first gen of gamers और Hmm. streamers जो कि अभी Hmm. समझ लो निकल के आ रहे हैं, and ये बाद में maybe you know I can go into casting, maybe Hydra can go into, you know, maybe something with his I know what I'm going girlfriend into. वाला Esports. wife, कुछ भी ऐसे Go बिजनेस खोल into सकता है ये कोई, क्या बात हुई भाई? अरे Yeah. मतलब बिजनेस हो सकता है कोई भी, मे बी नॉट गेमिंग से रिलेटेड, मे बी क्योंकि भाई क्या पता कोई I सिमुलेशन heard डिवाइस बेचने की दुकान खोल I ले, heard something different is what कुछ भी। I'm saying कि क्या बात है? Go into girlfriend क्या होता है मुझे नहीं मत समझो चलेगा। अरे वो थोड़ा Now I'll अंग्रेजी में हुआ, इधर उधर हो I, गया। भावनाओं I, समझो यार, शब्द पे मत जाओ. हाँ, तो व्हाटएवर, लाइक हो गया इट्स तो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, क्या होगा नो आइडिया, बट हाँ ये है चलो कि वी आर टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे बाय डे, लाइक चल रहा तो है। मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। जैसे ही तुम इस करियर में हो जो तुम्हें पता है कि एज के साथ तुम नहीं सस्टेन कर पाओगे उस करियर में। मैंने तो प्लान करके रखा है कि आगे जाके इफ आई ग्रो इनटू मिलियंस एंड माय फॉलोअर्स लाइक आर एक्टिव एंड दे सपोर्टिंग मी, आई विल प्रोबब्ली स्टार्ट अ ब्रांड दैट आई कैन ऑब्वियसली प्रमोट मेरे चैनल पे ही। जैसे मैंने अभी आई रिसेंटली थॉट ऑफ making a t-shirt, a clothing brand, thought of making merch. Well, it's very difficult, I'm not finding enough time to do it, but I will definitely do it. So that's something that I would like to explore later. कि समझ लो मैं 35 का हो गया हूँ, नाउ आई एम डन विद स्ट्रीमिंग। ऑब्वियसली मैं 15 साल हो गए होंगे मेरे को स्ट्रीम करते हुए, तो मैं बोलूँगा यार अब इसमें तो नहीं रखा कुछ भी, मतलब हो गया मेरा इसमें 15 साल करके, तो फॉलोअर्स है। अब कुछ नया ब्रांड बनाते हैं थ्रू द एंगेजमेंट दैट वी हैव. It can be a t-shirt brand, a clothing brand, it can be any business that it resembles a bit of your personality. Jैसे let's say you love coffee, so you start a coffee brand. You can make money out of that as well. Like you just drop a small business and promote it through your through the influence that you have. Yeah, that's the जस्ट plan. हाउ एलटीटी इज डूइंग, Yeah, but they're continuing streaming or not streaming, making videos uh, दे हैव while मेड अ Yeah, making ह्यूज so content. टीम। I feel like you मैं can. क्या बोल रहा हूँ, while doing the business. हाँ, यप, तो मतलब अभी जैसे लाइव स्ट्रीम छोड़ के तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग लाइक कंटेंट जो कि एवरग्रीन कंटेंट, लाइक जैसे लाइफस्टाइल कंटेंट हो गया. यू कैन ऑल्सो ट्रांजिशन टू दैट लेटर ऑन मे बी, बिकॉज अब गेमिंग मतलब और गेमिंग की ऑडियंस यूजुअली ऑलवेज थोड़ा यंग रहती है, एंड देन दे वोंट बी एबल टू रिलेट टू समबडी हु इज ओल्डर. व्यूअर्स या व्यूअर्स को धंधा बना के यूज करोगे मतलब नहीं. नहीं. नहीं, ओह व्यूअर्स को अच्छा, धंधा नहीं चैट बनाया, हम पढ़े. आपको ऐसा प्रोडक्ट देंगे, हम हाँ आपको ऐसा मतलब प्रोडक्ट देंगे कि आप पागल हो ऑब्वियसली जाओगे. दिस इज अगेन, ये हम लोग ऑब्वियसली हम लोग भी अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे जाके. अभी भाई मैं नोबडी तो हैज, स्टार्टिंग में दिस इज द बोलता हूँ, फर्स्ट जनरेशन. हाँ हाँ मैं तो बोलो. स्टार्टिंग में बोलता था कि यार तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तो तुम पत्थर को भी 50 रुपए में बेच सकते हो. सो हम्म. डोंट वरी, मैं वो नहीं करूंगा ऐसा, या तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा. वी विल डेफिनेटली गिव यू गाइस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इफ वी एवर डू बिजनेस. So that's why like I started doing more vlogs as well, because I know gaming अब like obviously as you get older उतना sustain नहीं होगा सिर्फ gaming से. You have to like branch out to other
areas as well. Like जैसे Yeah. vlogs, videos वगैरह वो तो evergreen है, हमेशा चलते हैं videos. So that is my plan so far. देखते हैं आगे यहाँ जाके तो क्या पता होगा. है एक और चीज 40 क्या? की उम्र तक इतना पैसा बना लो, इतना पैसा बना लो हाँ, कुछ करने का जरूरत गेमिंग ही नहीं. करके, नहीं सब कितना छोड़ पैसा छाड़ बना के. लो, फिर मस्त नॉर्थ में जाके कॉफी शॉप डाल दो और चिल लाइफ जियो भाई। मैगी शॉप, कॉफी शॉप, मस्त एकदम. हाँ, अरे छोटा सा मस्त कॉफी बिजनेस Easy. और इन्वेस्ट करके रखोगे अपने पैसे अच्छे स्टॉक्स में एंड स्टफ, हाँ. इन्वेस्टमेंट्स कर दो भाई, बेस्ट Yeah. लाइफ, रिलैक्स एकदम, नॉर्थ वॉर्थ चले जाओ, आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वही है भाई, गोल तो वही है रिटायरमेंट का। ठीक है, anything you want to add? A lot of people in chat are also waiting for your कोई तो बोल रहे हैं कि आपको टारगेट कर रहे हैं क्वेश्चन से, so यार मैं आखिर में ऑलरेडी स्ट्रीमिंग के साथ साथ 2-3 चीजें कर रहा हूँ। और पहली बात तो यार, मैं जब भी लोग चैट में पूछते हैं कि ठीक है कब तक स्ट्रीमिंग करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 70 एज तक अगर लाइक जिंदा रहा तो तब भी आप मुझे स्ट्रीमिंग करते हुए देखोगे। डजंट मैटर 10 की वॉचिंग है फिर 1000 की वॉचिंग है, क्योंकि यार गेमिंग से मैं अलग हो ही नहीं सकता। और जो भी चीजें करूंगा वो गेमिंग रिलेटेड ही होगी। तो अभी मैं ऑलरेडी लाइक मैंने शायद आपसे शेयर किया भी होगा कि लाइक मेरी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम चल रहा है, जहाँ पे हम लोग सिमुलेशन प्रोडक्ट को, गेमिंग प्रोडक्ट को या फिर पेरिफेरल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट प्रोटोटाइप पे भी काम चल रहा है। तो वो मैं कर रहा हूँ। अगेन लाइक मेरा 12 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। सो आई एम असिस्टिंग सम एजेंसीज इन द ब्रांड कैंपेन्स लाइक ज़ाया, हाइड्रा एंड सिख, पाजी तीनों तीनों को पता है। तो मैं ऐसे एज अ पार्ट टाइम, लाइक कोई ऐसे ऑफिशियल नहीं, बट अगर कोई दोस्त है इंडस्ट्री से जिसको लाइक मेरे एक्सपीरियंस की या फिर लाइक उसमें हेल्प चाहिए, तो मैं उनको असिस्ट करता हूँ। सो उसमें कोई लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते, बट लाइक आई जस्ट लव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो वो हम लोग करते रहते हैं, इन्वेंट करते रहना है, क्योंकि यू नेवर नो कल को इवन तो आपको कितना भी स्ट्रीमिंग करना है, कल अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर देती है कि आप कोई भी एक शूटर गेम नहीं खेल सकते या फिर गेमिंग ही बुरा है, लाइक यू कांट स्ट्रीम और यू कांट प्ले गेम्स ऑन लाइव स्ट्रीम क्योंकि वो यूथ को खराब करता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। सो अगेन लाइक बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इनटू Yeah. सच काइंड ऑफ अ करियर। got it. कुछ भी हो सकता है, लाइक इंटरनेट आपके एरिया का काट दिया जाए, मे बी समथिंग हैपेंस और अरे इंटरनेट काट दिया, वो तो कभी नहीं होना। whatever. I know for a fact Oh. Sikhwarrior had issues with this as well, with the internet katna when he did move his setup, so I can completely resonate with that. बट आप लाइक एज फैक्टर मुझे लगता है कभी भी उसमें आएगा अगर आप एंटरटेनिंग हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ओल्डर स्ट्रीमर्स। अगर आप डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट की बात करोगे, लाइक ही इज नॉट यंग, ठीक है भाई, बट वो एंटरटेन कर रहा है। इवन आप लाइक मूवी लाइक बॉलीवुड में भी जाओगे, लाइक 55 साल के 58 ईयर्स ओल्ड एक्टर्स स्टिल प्लेइंग कॉलेज गोइंग, क्योंकि वो एंटरटेन कर पा रहे हैं। जब तक आप करोगे एंटरटेन, जब तक आप लोगों को कुछ नया नया लाते रहोगे, आई डोंट थिंक सो कि कुछ वो एज वगैरह सब रीजन होते हैं। जब आप नहीं कर पाते हो ना कुछ अच्छा, देन यू गिव दैट एज एज अ रीजन कि नहीं हो पा रहा है, अब लोगों की टेस्ट बदल गई है, लोग ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंटरटेनमेंट हो तो सब कुछ Right. बिकेगा ब्रो, बॉस, फर्क नहीं पड़ता। आप में वो होना चाहिए All right. बेसिकली। So, Correct. absolute last question. This is, of course, your message for aspiring PC game streamers out there. I will start with you, Sikhwarrior. Message. Only message. Don't come for the money. Come I if think you हम are सबको वही enjoying. बोलना था. Come That's what if we've you been saying. want to be a part of it. Like आपको entertain करने में मजा आता है लोगों को, और मे बी उनसे engage करने में मजा आता है. स्ट्रीमिंग इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। लाइक आप कितना ज़्यादा एंगेज रख सकते हो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने ऑडियंस को। एंड जितना ज़्यादा एंगेज, उतना ज़्यादा आप ग्रो भी कर सकते हो। मे बी यू हैव अ पोटेंशियल टू डू मोर। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। बाकी हाँ, अब बाकी सारे पॉइंट्स इस पूरे पॉडकास्ट में कवर हो चुके हैं, वोंट रिपीट। Yeah. एंड ओनली थिंग इज दिस, नथिंग एल्स। ठीक है भाई। मेरा एक ही मैसेज है, अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग में आना है, 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। कट डाउन योर स्लीप टाइम, यूटिलाइज दोज प्रेशियस 3 आवर्स एंड कंटिन्यू विथ योर मेन करियर। बिल्कुल भी उस पर सेक्रीफाइस मत करो, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो आप साइड बाय साइड पैशनेटली करोगे, आप इवेंचुअली सक्सेसफुल होगे। दैट्स इट। वर्ड पैशन नहीं है। हाइड्रा को बहुत सारे ब्रांड्स पैसे दे रहे हैं, हाइड्रा को देख के स्ट्रीमिंग में मत आओ। आपको जेन्युइन लग रहा है कि आप में स्किल्स है, तभी आओ। अगर किसी और को देख के आओगे, आप करियर खराब कर दोगे अपना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइड्रा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ। टारगेट द I, गुड I, एग्जांपल दो ना कि हाँ, जाया ऐसा को है। देख के अगर आप आओगे मैं स्ट्रीमिंग में कि तुम्हारा जाया को ब्रांड्स हाँ। बहुत पैसा दे रहे तो मत आओ, क्योंकि इधर ये हर एक के बस का इधर है नहीं वो है। आपको काफी अलग होना पड़ेगा, काफी क्रिएटिव होना पड़ेगा उस लेवल तक जाने के लिए। सो पैशन है, आपको मजा आता है गेमिंग स्ट्रीमिंग करने से, देन ओनली गेट इनटू दिस करियर बेसिकली। I saw Hydraflick मैं go कहूंगा directly into Donald Duck mode. अ, इट इज लाइक मैं मुझे क्यों कहूंगा तोड़ा अगर मैंने आ कहा। रहे हो वही मुझे क्यों थोड़ा यार मैं कहूंगा अगर अगर स्ट्रीमिंग में आ रहे हो गेमिंग में आ रहे हो तो एक प्लान लेकर आओ बिना प्लान के मत आना आके टाइम वेस्ट मत करना एंटरटेन करना है तुम्हें खुद को करना है तो वो अलग बात है बट अगर तुम्हें ऑडियंस को एंटरटेन करना है तो सिट डाउन प्लान इट आउट एंड देन ओनली कम इनटू स्ट्रीमिंग एंड आई वुड से बिल्ड एन ऑडियंस फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनटू लाइव स्ट्रीम्स before even getting onto YouTube, find a platform where you can find audience easily. Instagram is a platform where you can find audience easily. Now YouTube Shorts some is a place where you can find audience easily. So target those specific sectors जहाँ पे तुम्हें एक ज़्यादा रीच मिल रहा है एंड देन वहाँ से लोगों को डायरेक्ट करो कि तुम मेरी लाइव स्ट्रीम पे आओ या तो मेरे वीडियोस देखो समझ रहे हो राइट अवे डोंट जंप इनटू स्ट्रीमिंग कोई नहीं देखेगा जीरो वॉचिंग पे बैठे रहोगे महीने महीने बेटर है कि तुम ट्रू। कंटेंट बनाओ बढ़िया से अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से जो रिकमेंड होता है उस पे रीच आउट करवाओ और लोगों को डायरेक्ट करवाओ कि यहाँ देखो आज मैं इस दिन ये लाइव करने वाला हूँ आ जाना दैट्स द ओनली एडवाइस So from me, I feel ओके like सबने बोल दिया है सब कुछ, but I would like to add कि when you're starting out, I guess that's when you are free to experiment also with your content and see what's working for you. And yeah, you can go ahead like with whatever you're enjoying plus what's working for you. So you have that freedom to experiment. So you should definitely do that. And again, like पहले videos banao, get an audience. Now shorts are really helping people a lot. Like new channels का like shorts वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है. So try that. पहले एक ऑडियंस गेन करो फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे आओ नहीं तो फिर लाइव स्ट्रीम सीधा चालू करोगे ऑडियंस बनना बहुत मुश्किल होगा. Apart from that, again, Instagram, be active on like all social media platforms. I know it's very difficult and वो मुझे भी करना चाहिए मेरे से भी नहीं होता है हर जगह एक्टिव रहना but that is just how आई you're gonna gain new audience उधर से. So and then Twitter की audience, Insta की audience वो सब फिर तुम्हारे YouTube stream पे आएंगे. So yeah, these are few tips and I think बाकी सब तो सबने cover कर ही दिया है. Yeah. और I somewhere एक think पॉइंट in बस my ऐड करना है मुझे in my किरण भाई mind की ऑलवेज Hmm. वॉच योर ओन कंटेंट कि सच में आपको अच्छा लग रहा है क्या? अपने आप से पूछो कि True, यार true. मैं जो बना रहा हूँ इज़ इट रियली गुड? क्योंकि वहीं पे आपको आधे आंसर्स मिल जाते हैं कि नहीं यार लाइक जब आप अपना कंटेंट खुद देखते हो तो पता चलता है कि एज़ अ थर्ड पर्सन अगर मैं इसको देखूँ तो क्या मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूँगा? क्या मैं इस चैनल को लाइक करूँगा? एंड देन इम्प्रोवाइज़ ऑन दैट। ऐसे करते-करते आप इवेंचुअली उस पॉइंट पे चले जाओगे इफ यू आर लाइक सच में आप में स्किल्स है तो। एल्स यू विल गेट टू नो कि नहीं यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है और जितना जल्दी आपको पता चलेगा उतना आपके लिए बेटर होगा। मैं कह रहा था Hydraflick, you somewhere in wanted to our add something? minds we know that whatever we've said today we might be a little ऐसा hypocrite कि ये खुद तो नहीं कर रहा है ना Exactly. so that's where I want you all to know कि अगर तुम कर सकते हो वो चीज़ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ हम लोग नहीं कर पाए और हम लोग यहाँ तक पहुँचे तुम करोगे तो कितना आगे तक पहुँच सकते हो सो गुड लक विद योर जर्नी एंड यस हम लोग थोड़े लेज़ी है तुम मत होना you guys can Like go you actually. guys can go far you guys can go far if you're not lazy या I'm a एग्ज़ैक्टली। little lazy and we all are a little lazy if you're not सुपर लेज़ी। yeah there's good scope for you मैं आधी it's जो just the चीजें same. Like बोलती हूँ ना इट्स लाइक आई नो आई वांट टू यूटिलाइज दोज थिंग्स फॉर माई सेल्फ एज वेल जो मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ एंड आई नो आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई नो आई शुड बी डूइंग इट सो या मतलब yeah it's like वही but we कि know that सबको it's पता है useful कि so that's why we're sharing it आईआईटी या का सिलेबस क्या है, आईआईटी क्रैक कैसे करना है, बट कर नहीं पाते ना सब। वही है ट्रू पॉइंट। या अब जो कर सकता है वो कर लेगा कीप ट्राइंग कीप So एक्सपेरिमेंटिंग yeah, I think to summarize, essentially, I think it is in agreement that to start off with, you need to create content that you like, that you would watch.
and keep exploring, keep innovating yourself. And as long as you're putting out good content, I think success and money is a byproduct of the good work that you're doing, and that will follow. So thank you so much, Xyaa, Hydraflick, the Gamers Toys, Sikhwarrior, for joining today. Apologies again for keeping you lot longer than what we had intended, but I loved the conversation. I hope you did as well, and I hope the audiences Yeah, did yeah, as well. Full definitely. moja. For all the audiences tuning in on the YouTube chat, you can find links to all these wonderful content creators. Please go ahead, subscribe, and follow them on YouTube, on Instagram. I absolutely enjoy all your content, and I will continue to follow all of you, and I hope the viewers do as well. All the very best to the four of you in your journey as PC game streamers and content creators. We will talk soon. Thank you so much for joining in. Good night. Also, Thank guys, you. subscribe to this channel as well.